which is called the court number 4. Here the Khelo India University Games 2022, where 6 courts for the lawn tennis is being equipped. Virendra Giri, the chair umpire for this important men's singles. We saw from morning what happened in the women's singles and women's doubles. And, it was a beautiful sight to watch at Kalinga University from Orissa, sealing everything. And Rutuparna Chowdhury and of course Bista making sure they sealed everything for them, the women's singles and also the men's doubles, as Virendra Giri is sitting out there. Just that I like that some sort of a pronunciation. I'm Navin Shauri, along with me is Mahesh Tiwari. You know, I'm just say, you know, instead of Mahesh, it was Vignesh if you're sitting, okay? We would have had as Bignesh. We don't have the V pronunciation, you know, during Assam, eastern states, whatever you take it as, Assam, Nagaland, Manipur, Mizoram, Meghalaya, and even Kolkata, West Bengal. They don't have the you know, V pronunciation. They don't have that. They have the B pronunciation. You know, that's very, very nice. And similarly, Mahesh, you know what? You know, in your name, down in my territory, my place around in Tamil Nadu, Chennai, and all that, you won't be called as Mahesh. You would be called Magesh. Ready? Yeah, you would be called as Magesh. So we don't have a Ha pronunciation in Tamil, basically. In Kannada, we do. Kannada Ha is very, very predominant. As fifth in love. Arambh. That's a nice Sanskrit word. As the you know, game has started. 15 to Parth from Shivaji University. Yesterday Shivaji University sealed it nicely. 15 love in favor of Parth. So if you're sitting to a proper Tamilian, I am a proper Tamilian as well. Love. But I've been having that little bit of you know, English touch with me, so I can pronounce it to you as Mahesh. But if it's not, it's going to be Magesh. Magesh. Even, but yeah, Mahesh Tiwari is better. Thank you. चाहे महेश बोलो चाहे मगेश बोलो, but you have welcomed me. Thank you very much, नवीन शौरी. और ये मुकाबला जो यहाँ पर चल रहा है पुरुष एकल विभाग का, पुरुष विभाग के अंतर्गत एकाना स्पोर्ट्स में आज के दिन का पहला मुकाबला ग्राउंड नंबर 4 पर जो पुरुष के विभाग में खेला जा रहा है. और यहाँ पर पार्थ पाटिल जो कि शिवाजी यूनिवर्सिटी के हैं, मुकाबला कर रहे हैं यहाँ पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी, और लुकेश नेताम जो हैं वो सामना कर रहे हैं यहाँ पर पार्थ पाटिल का. और जैसे सूचना दी गई, आपको बताया गया कि पार्थ पाटिल इस समय 30 लॉ से आगे चल रहे हैं. जिस तरह से उन्होंने डाउन द लाइन बेस लाइन पे खेलने की कोशिश की थी, बाईं तरफ कमिट हो गए थे वहाँ पर लुकेश, लेकिन वापस नहीं कर पाए और नतीजा निकला कि स्कोर इस समय पक्ष में है पार्थ पाटिल के 30-15. Yesterday Parth suffered against Delhi University's Mohammad Samir. He lost that first match. Of course, went into the third set, but he lost it. And then Sandesh had to come back and seal it in the second match. And then in the doubles, 40, it was a wonderful display of power and coordination from Sandesh and Parth. So Shivaji University sealed that third match, and they also won the tie. But today, Parth, he has to start well against Lukesh Netham of Pandit Ravishankar Shukla University. This is Lukesh. We saw what Parth will do. He is very, very uncomfortable serving from that right side of the court, from either side. See, again starts off with the first fault. बिल्कुल कल जो गलतियां थी वही गलती शायद डबल फॉल्ट दिया यहाँ पर मौका मिला. 40-15 स्कोर. तो कल जो गलतियां हमने ध्यान में लाई थी, दर्शकों के भी, खिलाड़ियों के भी, और जो सुन रहे थे टीवी सेट के सामने शायद उनको भी हमने दोहराया था कि वो गलतियां जो राइट साइड से सर्व करते हुए कर रहे हैं, वो गलती आज यहाँ फिर से नजर आ रही है. जहाँ तक पार्थ पाटिल का सवाल है, स्कोर फिलहाल 40-30. Yeah, you know, me and my Dushyant, when we were having that conversation, the cross court, oh, that was a big ace serve. That was nice. First game is in favor of Parth, and Shivaji University have started it nicely, even with that double fault. So yeah, me and Dushyant, Mahesh, we were discussing about a very nice comparison. You know, I do a lot of cricket. I've played a lot of cricket and also call a lot of cricket on the broadcast at different levels, at every level. In fact, I always tend to see that, you know, the service of the tennis server and the bowler, the action
is almost the same. You know, of course, here you have the high toss-up where the bowler, the arc has to be completed with the non-bowling arm going towards the slips, whether it's a left-hander or a right-hander batter. It has to just go towards the slips, and that is the arc that you need to create. And Dushyant also compared it nicely with the server. Of course, the arc needs to go, of course, not to the slips, towards your opponent. That is what Parth is not having when he's serving, you know, cross-court serves. He's okay down the line, sometimes okay. That's why we always say, even from yesterday, that, you know, when he serves from the right side of the court, from either side, he does not do a nice, proper cross-court serve. Down the line is not that uncomfortable. As now Lukesh is serving team representative who is, you know, across the court. Not present on court number 1 from Anna University and Savitribai. He was just disturbed with the audio on the court. Representatives, if you are not just on court, disturbed with that. you're requested to It's come not to started immediately. on this occasion. Yeah, it's 15 love only. So yeah, that arc that you create, and I've been grilled by my coach of producing the arc every time when I go near the popping crease for delivering the ball. Oh my God, I just can't forget in my life. He said, forget your ball speed, forget your ball length, line, all that is secondary. Where is your arc? I mean, हाथ में ball हमसे छीन के हमको खाली arc बनाया जाता था on the coaching lines. तो बहुत डिफिकल्ट होता है किसी भी खेल को अख्तियार करना, उसमें माहिर जो मास्टरी है उसे प्राप्त करना. तो चाहे क्रिकेट हो चाहे कोई भी गेम हो, वहाँ पर हाथों का इस्तेमाल, एक पूरी आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, वो जो प्रदर्शित होनी चाहिए जो आप सर्व करते हैं, तो वो जो बात जिक्र आपने की नवीन, फिलहाल यहाँ पर 30-15. Yeah, that forehand was a little wider there, Mahesh. So he gave away that first point, 30-15. We will keep updating you on the score as and when. It might have a slight delay. People watching, just once again, I keep apologizing about this. Might be a slight delay, but listen to us on the commentary. Oh, come on! That was a full plate meals that he had to just gallop it out at one go. He just spilled it on him. Lukesh, it was an empty court. He could have placed it anywhere he wanted. लेकिन कर नहीं पाए. इस तरह की छोटी सी गलती अगर आप करते हो इतने बड़े मैच में, तो मुश्किल है फिर आपको अंक प्राप्त करना. खाली पूरा मैदान खाली था, कहीं भी आपको ड्रॉप करके अंक ले सकते थे आप, लेकिन कर नहीं पाए और अंक मिला वहाँ पर 30 ऑल का स्कोर. It was astonishing, Mahesh. It was really astonishing. He had the nice shot. The shot selection was correct. Backhand. Correction. Yes, it was right. And there you go. Another point. Parth gets it. Oh, 30-40. थोड़ा आसान लग रहा है आज पार्थ के लिए जो मुकाबला आज यहाँ पर देखने को मिल रहा है. मेरे ख्याल से पार्थ आज खुश होंगे कि जिस तरह से अपोनेंट उनका खेला, क्योंकि खाली कोर्ट था वहाँ पर. कोई खिलाड़ी क्या, दोनों खिलाड़ी के कोर्ट में था ही नहीं, और अच्छा मौका था कि केवल ड्रॉप करके वहाँ पर अंक ले लें, लेकिन ऐसा किया नहीं और स्कोर इस समय 30-40. Yeah, compared to yesterday against Mohammad Sameer, today Parth is a little comfortable. Of course, not as a stronger opposition like Sameer, and you know, also more than the opposition, the sun has also gone down completely. 4 o'clock exactly local time. He said in Lucknow. I overruled. A little bit of a discussion on the scoring. It should be 40-30 is what he says. That is what it is. As Birendra Giri there, correction. That was good. The chair umpire is trying to convince Parth in the scoring lines. It has to be 40-30 in favor of Parth, but it's currently showing 30 all. It was the out that was been given away. That is the discussion. Tries to cover the mic. Come on, Birendra Giri, we need to listen to you. The reason why we have put you that wonderful lapel mic is because whatever you say, we have to listen. You just can't cover that. रिप्ले के जरिए देखिए कहाँ पर खेला था और अंक वहाँ क्यों नहीं मिले उन्हें. हमें 30-40 हम लोगों ने भी कह दिया था, लेकिन वैसा हुआ नहीं और 30 ऑल पर स्कोर इस समय अटका हुआ है. फिर सर्व करने के लिए तैयार वहाँ पर लुकेश. I think they have nullified that point and said, okay, we'll go with the reserve. It was called out. It was called out, and that's why Parth left it, and it was clearly out. They just nullified that point. Double fault. Yeah, that's it. 40-30 now. All that discussion Parth had
without even touching the ball, he's got 40-30 now in his name. Correction, 30-40. 30-40. तो जो जस्टिस होना था, जो न्याय मिलना था, वो मिल गया उन्हें आसान से, क्योंकि लुकेश ने लगातार 2 गलतियां की, डबल फॉल्ट की। और लेकिन मैं किस्मत में हर बार नहीं मानता, लेकिन वो बोलते हैं कि अगर आपकी किस्मत में लिखा हो तो बिल्कुल होता है, बिल्कुल मिलता है। I mean, hard work is what I completely believe. वो तो है। Sometimes you don't want to call it kismat, you want to call it as good karma, maybe. बिल्कुल। तकदीर में लिखा है तो जरूर मिलेगा, लेकिन उसके लिए कर्म भी होने चाहिए आपके। अगर भाग्य मिलेगा। इस समय ड्यूज स्कोर बराबरी पर चलता हुआ स्कोर, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल इस मैच के बारे में कि अच्छी वापसी यहाँ पर लुकेश की, एक लाभ की स्थिति में जरूर थे वहाँ पर प्रारंभिक क्षणों में पार्थ पाटिल, लेकिन जिस तरह से वापसी हुई है, एक पॉइंट के लिए वहाँ पर थोड़ी देर के लिए अंपायर से बात हुई थी गिरी से, लेकिन बाद में पॉइंट नकारा गया। लेकिन उसके बाद डबल फॉल्ट के जरिए स्कोर पार्थ का आगे बढ़ा और अब स्कोर है इस समय ड्यूज पे। क्या एक गेम यहाँ पर लेना चाहेंगे? एक गेम की बढ़त पहले ही हासिल है पार्थ को। तेजी, थोड़ा सूरज की जो रोशनी है, या तेजी से कहिए गर्मी जो है थोड़ी सी कम हुई है। Out. 4 o'clock. It is setting down. You can see the shadow of the Advantage. lights traveling towards the Pandit center Ravi court. Shankar University. Advantage now to Lukesh. Lukesh Nitham. This is what happened yesterday also, isn't it, against Mohammad Samir. Parth won the first game. He also closely lost the second game, and he won the third game. And then Mohammad Samir came back in the first set. So Parth needs to understand that if he gets that initial momentum of victory, if he is tasting success, he needs to just carry on. And he's not able to do that, Parth. Fault और यहाँ पर it's deuce. He's thrown away the advantage. It was a double fault. ड्यूज की स्थिति यहाँ पर इस साइड में रहो, लोकेश जिस साइड से सर्विस संघर्ष जरूर करना पड़ेगा। आज थोड़े से बेटर खेल रहे हैं पार्थ पाटिल कल के मुकाबले। 1-0 की बढ़त उनके पास हासिल है। दूसरा गेम चल रहा है इस समय, और इस समय फिर बेस लाइन पे पीछे खेल गए और एडवांटेज की स्थिति लुकेश के लिए। पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी। Strong forehand. Just couldn't keep it inside the base. So important now for Parth Patil to actually keep it going. Nice return. Out. High lob and goes outside the baseline. Right, now again advantage to Lukesh. He's thrown it away and on the deuce as well. काफी बाहर खेला था और यहाँ फिर ड्यूज की स्थिति। लगातार प्रयत्न जारी है वहाँ पर लुकेश नेताम के। खेलो इंडिया के अंतर्गत ये खेला जाने वाला मुकाबला टेनिस का आज के पुरुष भाग का पहला एकल लुकेश नेताम और पार्थ पाटिल के बीच। हो बाहर खेला वहां पर। एडवांटेज अगेन गोस टू लुकेश, क्योंकि काफी पीछे खेल गए थे। पंडित रविशंकर फोरहैंड का इस्तेमाल किया था, लेकिन काफी दूर बेसलाइन से। Couldn't he have just sliced it? See, he had the opportunity. Lukesh was behind there in the baseline. He wanted to go for that smash on the forehand. Didn't get it right. Could have just sliced it. As Lukesh was no way coming near the nets. He's got the advantage. He shouldn't throw it away. And you don't have to throw it away. That's the first game for Lukesh. It's 1-1 now in this first set. Both have won one game each. Parth Patil and Lukesh Netham. और हेलो सुनो, Pandit Ravi Shankar Shukla University versus Shivaji University yesterday. Just came through with the brilliance of Sandesh Dattatreya. I think today also he looks like he has to come for the rescue. देखना ये होगा, लेकिन आज
स्टार्ट करने के बाद अच्छी स्टार्ट करने के बाद कल भी अच्छी स्टार्ट की थी पार्थ ने, लेकिन यहाँ पर एक गेम जीतने के बाद दूसरे गेम में यहाँ पर फिर उन्हें मात दी लुकेश नेताम ने, और एक गेम की बराबरी चलती हुई इस मुकाबले में। पुरुष एकल का मुकाबला ठिकाना स्पोर्ट्स ग्राउंड के लॉन टेनिस कोर्ट पर। महिलाओं के 3 मुकाबले जो खेले गए आज, और तीनों मुकाबले वहाँ पर बहुत ही एक तरफा सा जीता कलिंगा यूनिवर्सिटी ने, कलिंगा इंस्टीट्यूट ने, और निश्चित रूप से ये अच्छी उपलब्धि उनके लिए। And also I will say even on court number 1 the matches were closely followed. Jain University Bengaluru, and they also made sure they sealed the tie courtesy Shreya, and of course Pragati played well but lost her second match. Shreya is coming across and winning the doubles as well comfortably, so no problem. And Jain University actually they took upon Hemachandra, North Gujarat University. Hemachandracharya, North Gujarat University. Now 15 score. 15 low. Parth. Fault. वहाँ नेट के पास लाने की कोशिश की थी, नेताम ने हल्के हाथों से खेला था, लेकिन पहुंचने की कोशिश भी पार्थ ने की जरूर, लेकिन नेट पर खेल गए वहाँ पर लुकेश, और अंक मिला वहाँ पर पार्थ पाटिल को 30 लॉ। Backhand on asking him to come near the nets from the baseline was tough. There, he was trying to run in, but it was a backhand that actually got Lukesh giving away that point. 30 love. Again cross-court problems. See that arc that we always keep speaking about, that nice little angle that you need to create doesn't come across. Oh, double fault. He tried to toss the ball up, the ball went behind his head and he had to reach it in an awkward position, and it's a double fault, giving away the first point to Lukesh. ज़्यादा कुछ करने की कोशिश जब करता है खिलाड़ी तो इस तरह की गलती होती है। जैसे आपने कहा हाई टॉस किया जरूर उन्होंने, लेकिन उस दिशा में राइट नहीं थे, नीचे नहीं थे कि जहाँ से वो अच्छी तरह से रिटर्न कर पाते, और फिर वही गलती पहली सर्व उनकी फॉल्ट होती हुई, और ये उनका अगर औसत देखा जाए तो बहुत ज़्यादा होगा। बैक हैंड और आगे लैंड नेट के पास गलती करने के लिए विवश किया। 40-50। Yeah, nice. 40-15. That was nice. He's very strong as a four-court player, because we saw yesterday what he can do in the doubles, because it's more of Sandesh who was there, and Parth was holding that four-court very nicely. And look at Lukesh intelligently going into the shades, saving some humidity and sweat that was going out. He ran in well but couldn't put it across outside the nets. 40-15. Draws him closer. Good return. Very, very good return. It looked as if he's going to leave that, but on the half volley he took it, and what a fabulous forearm to seal that game. 2-1. 2 games to 1. Of Parth. बहुत बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया यहाँ पर, कम से कम बहुत चतुराई दिखाई, फुर्ती दिखाई, और मूवमेंट देखी, बॉडी लैंग्वेज उनकी देखी, किस तरह से उन्होंने बाएं और दाहिनी तरफ दौड़ लगाकर अपने आप को पूरी तरह से मैच में बनाए रखा, और तेज़ी के साथ वहाँ पर पहुँचे, हल्के हाथ से लूप जैसे खेला और पीछे खेलकर वहाँ अंक अर्जित कर लिया। तो 2-1 की बढ़त इस पहले सेट में हासिल है पार्थ पाटिल, जो कि शिवाजी यूनिवर्सिटी के हैं। तो कल की जो गलतियाँ थी और कल का जो प्रदर्शन था लगभग उसी दिशा में जा रहे हैं, लेकिन इस समय ये गलतियाँ आज जीत का जो उन्होंने सेहरा थामे रखा है पहले ही, वो शायद वो खोना नहीं चाहेंगे, वो रिदम खोना नहीं चाहेंगे। कल अच्छी शुरुआत के बाद उन्होंने मैच गंवा दिया था, लेकिन आज देखना है कि नेताम के खिलाफ क्या वो ये जीत का दौर बरकरार रखते हैं, कामयाबी हासिल करते हैं। On the high pointers, you can see the mistakes of Lukesh. There you see, speaking about that backhand on the drop. Time. He's struggling with backhands, Lukesh. Once again, it was very widely placed. Small things
looks so obvious on screen, isn't it? Every time we've seen the forehands were nice. Yeah, see, these returns are good, but when he goes towards the backhand, Lokesh struggles. Lokesh Nitham of Maharshi of Pandit Ravi Shankar Shukla University. Right, in favor of Shivaji University. Lokesh has the control, commits a fault on the first serve. ओहो, फोरहैंड बिल्कुल बाहर, ताकत के साथ खेला गया उनका ये फोरहैंड स्ट्रोक और बिल्कुल बाहर की तरफ खेले और स्कोर का सिलसिला जहाँ तक है लव 15 जो कंट्रोल होना चाहिए खेलते समय, वो फोरहैंड आपका अगर ज़्यादा उठ जाता है, ज़्यादा ताकत लग जाती है तो फिर डाउन द लाइन गेंद बाहर चली जाती है. Simple unforced error, not necessary. He had to play it in that direction as well. It was a fault, double fault. Right, love 30 now. And the double fault errors from Lokesh Nitham have been very consistent. That is why you're able to see Parth as a better player compared to yesterday. बिल्कुल आपका अपोनेंट, आपका प्रतिस्पर्धी किस तरह से खेलता है तो उस समय फिर आपके मंसूबे और बुलंद हो जाते हैं. लेकिन आज थोड़ा सा बेटर खेलते हुए नजर आ रहे हैं, गलती करने के लिए विवश कर रहे हैं. अनबने ढंग से ऐसा लग रहा है कि कहीं खेलना कुछ चाह रहे हैं और खेल कुछ रहे हैं. जैसे बैक हैंड से उन्होंने वॉली लेने की कोशिश की थी लेकिन नेट पे खेल गए, क्रॉस नहीं कर पाए और यहाँ पर लव 40. He had the elevation there, Mahesh. See, he nicely set it up with that forehand. He's got an issue with the backhand. He is struggling. You can clearly see what is troubling Lokesh. Love 40, not even a single point yet in this game for Lokesh. And he will not get a single point in this game. That's it. 3-1 on the game tally. And it's Parth and Shivaji University who will be really enjoying this evening time against Pandit Ravi Shankar Shukla University. 3-1 से मुकाबला अपने पक्ष में कर रखा है यहाँ पर पार्थ पाटिल ने. जिस तरह से उन्होंने पिछले गेम में अपना प्रदर्शन दिखाया, थोड़े से निष्प्रभ साबित हुए उनके सामने लोकेश नेताम. पार्थ थोड़े बेहतर खेलते हुए नजर आ रहे हैं और ज़्यादा मौका अपने तरफ से नहीं देना चाह रहे हैं जहाँ तक लोकेश का सवाल है. यहाँ पर बैक हैंड खेलने की कोशिश, फॉल्ट सर्विस में और 15 लव स्कोर इस समय. स्वागत है आपका दुष्यंत जी. Thank you, Mahesh. We've seen Parth play again today after we saw him yesterday. Seems to be playing much better than what he played yesterday. Out. बाहर खेले डाउन द लाइन, बैक साइड जो लाइन है बेस लाइन उसके पीछे खेलकर अंक दिया वहाँ पर लोकेश ने. तो 30 लव स्कोर इस समय. पहले ही 3 गेम के मुकाबले 1 गेम से आगे चल रहे हैं वहाँ पर पार्थ पाटिल. और यहाँ बैक हैंड उनका ड्रॉप और ये काफ़ी दूर जवाब मिला था जो उन्होंने फोरहैंड का इस्तेमाल किया था. पीछे की तरफ came on the net, put pressure on him and forced him to make the lob which went out. Net for service. 30 love, 3-1. Nice slice. Lokesh comes up and puts the ball in the net. Unforced error. 40 love. बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन. वहाँ पर पीछे की तरफ ले गए, आगे जाकर उसे वॉली करना चाहा लोकेश नेताम ने, लेकिन ये देखिए नीचे से ही और बिल्कुल नेट पर खेलते हुए. स्कोर 40 लव. He was trying to move in the front and keeping the ball over the net in the process made a. I can
see Parth really trying to thump the ball. Forty 15. स्कोर इस समय 40-15, पार्थ 40 और लुकेश 15. 40-15. Game. Shivaji University. That's game by Parth. Shivaji Parth University leads by 4 games to 1. That was a good serve on the cross court. That was a nice wide angle serve also. And we see Lokesh walking towards the changeover. Parth seems to be a much improved player than yesterday. After playing the singles, he partnered with Sandesh and they did a fantastic job by beating Delhi University. I request to chair umpire Rohit. 4-1 की बढ़त मैं समझता हूँ कि दुष्यंत बहुत बड़ी बढ़त यहाँ पर प्राप्त कर ली है. जहाँ तक पार्थ पाटिल का सवाल है, पूरी तरह से दोनों तरफ कोर्ट पे उन्होंने दौड़ाया है वहाँ पर लुकेश को, और यही सही रणनीति होती है. आप अपने प्रतिद्वंदी को थका देते हैं, उसे विवश करते हैं कि वो ज़्यादा दौड़ लगाए और उसकी एनर्जी को आप अगर बर्बाद कर देते हैं तो प्रारंभिक क्षणों में, तो फिर आपको एक गेम आसान हो जाता है आगे खेलने के लिए. हाँ महेश, आज इनका गेम बहुत बेटर लग रहा है. मोर इज लुकिंग मोर इन कंट्रोल. अब वो देखिए कितना अच्छा पासिंग शॉट मारा है उन्होंने. लुकेश को ये समझ में नहीं आ रहा है आगे जाऊं, पीछे जाऊं, दाहिनी तरफ जाऊं, बाईं तरफ जाऊं. यानी आज पूरे कोर्ट पर अगर इस गेम को पर्टिकुलरली हम देखें तो मैं समझता हूं कि यहाँ पर पार्थ ने अपने सारे हुनर दिखाए हैं. But we also have to see Mahesh. Yesterday also he started off well and then his game started declining in the second set, and thereafter he lost the third set. But he needs to keep the consistency, and let's see how the game goes. Oh, that's a nice serve down the line, but I think it's a fault. Both the players, there's an unnecessary unforced error. It was a routine shot. Love 15. लव 15. लुकेश बहुत ही ढिलवंगी के साथ मैं ये शब्द का इस्तेमाल करना चाहूँगा कि ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी अस्वस्थता जिसे कहते हैं ना, कि ज़्यादा गंभीरता से खेलते हुए नज़र नहीं आया. हालांकि गंभीरता ज़रूर होगी, लेकिन हमें जो नज़र आ रही है वो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा सीरियसनेस नहीं नज़र आया उनके खेल में. बहुत ही आसानी के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं और अंक के बाद versus Savitribai Phule Pune University. Both the players having a baseline rally. Bhatrinath versus That's what Lokesh needs to do. He needs to get his rhythm. Chair umpire Rohit. बेहतरीन 15 all. बहुत ही चालाकी के साथ खेलने की कोशिश की थी वहाँ पर पार्थ पाटिल है, लेकिन बाहर खेल गए और 15 ऑल स्कोर. Fault for serve. Mahesh, you can see the light shadows coming in the center of the court. Out. And that's an out ball. That's what Lokesh needs to do. He just needs to make him play more balls. गलतियां करना शुरू कर दिया है क्या पार्थ ने? क्योंकि देखिए यहाँ पर फिर कंट्रोल रहित उनका ये स्ट्रोक था डाउन द लाइन. अगर if he keeps hitting continuous ball, he'll create that pressure. Pressure is the only thing that can change the game completely. 30-15 के बाद में ये देखिए फिर उसी तरह की कोशिश, और यहाँ पर बाईं तरफ खेल का और ये मौका मिला और अच्छी तरह से वहाँ पर उसे कन्वर्ट किया पॉइंट के जरिए. बैकहैंड. That's a very easy pass by Lokesh because the drop didn't have much sting on it. You see that as nice recovery. That's beautifully done it on the backhand. बहुत ही बेहतर लुकेश का ये प्रदर्शन रहा है इस पॉइंट में. 40-15.
4 के मुकाबले 1 गेम से पहले ही बढ़त हासिल कर चुके हैं पार्थ पाटिल। गेम की रफ्तार थोड़ी सी कम होती हुई नजर आई है और यहाँ पर बाहर खेला और गेम पक्ष में जस्ट टच द लाइन। देखिए किस तरह से गलती हुई थी बाहर। That's an out ball. Yeah. I think the referee wants to play the point again. (40-15) 40-15 बहुत से खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो पहली सर्व फॉल्ट ही करते हैं, यानी ज़्यादा, लेकिन दूसरे सर्व में थोड़ा सा अपने आप को हो क्या बाहर खेला उन्होंने। I think the ball was good. Game. And game goes to Lokesh. That was a very nice cross University. As you were just mentioning, it looks like Shivaji a one-sided University affair. leads by 4 games. You can see Lokesh making a comeback. And that's a whipping cross-court forehand. And that Parth had nothing to counter-attack to that. बिल्कुल रफ्तार भी थी, प्लेसमेंट भी सही थी और बिल्कुल साइड लाइन के बिल्कुल पास खेलकर उन्होंने अंक अर्जित किया। तो 2 के मुकाबले 4 अंक इस समय उमेश के लुकेश के, यानी 4 के मुकाबले 2 अंकों से आगे हैं इस समय पार्थ पाटिल। तेज तर्रार सर्व करने की कोशिश, फॉल्ट होता हुआ, फॉल्ट वहाँ पर। ये गलती ज़्यादातर होती है पार्थ के जरिए। It's a matter of 1 break now. Good second serve. Out. And the ball is out. Love 15. Love 15. He is making some unforced errors by hitting the ball outside the baseline. जो तेजी, जो गर्मजोशी उनके खेल में देखने को मिल रही थी गेम नंबर 4 तक, वो अब थोड़ी सी कम होती हुई नजर आई है और गलतियां भी ज़्यादा हुई पिछले गेम में भी और इस गेम में भी। यहाँ पर पार्थ के जरिए लव 15 आउट, फॉल्ट सर्विस पे। ओह 15 ऑल। 15 all. Ball hitting the net. This game is very important for Parth. Mahesh, if he needs to take the lead, otherwise it will be back on serve. क्योंकि जिस तरह से बढ़त हासिल थी वहाँ पर पार्थ के पास 4 गेम जीत चुके हैं। 5वां गेम जीतना के बाद उनके पास 3 मौके और होंगे कि जहाँ पर वो 1 गेम भी जीत जाएंगे तो फिर nice approach. ओह, that's a very well constructed point. Very well constructed point. Good serve, moved, took it on the backhand, put pressure on Lokesh, and that's how he constructed the point. 30-15. Good tennis. नेट के पास और वहाँ से खेला था। Yesterday, Mahesh, when I was interviewing him, I asked him about certain faults I felt which are there on him. So he said, yes, definitely I reflected on them and I'll not. So at least if you start reflecting, you will start, 40, 15. Your road to improvement is always going to be there. 40-15. Lokesh representing Shivaji University. And that's Lokesh. Out. 40-30. 40-30 स्कोर इस समय। पार्थ पाटिल कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से लगातार, लेकिन कई बार आसान पॉइंट्स भी दे दिए अनफोर्स एरर के जरिए। उन्होंने जो गलतियां की, मौका मिला है वापसी करने का यहाँ पर लोकेश को। 40-30।
Fault. Oh, that's a very high drop. And that's ओहो बेहतर, बहुत ही बेहतरीन खेल का प्रदर्शन वहाँ पर। समझ रहे थे कि लोकेश कि वो वहीं खेलेंगे जहाँ पर बाईं तरफ मैं जा रहा हूँ, लेकिन पहले ही कमिट हो गए थे और दाहिनी तरफ उन्होंने ड्रॉप शॉट खेल के उसे हल्के हाथों से खेलकर अंक अर्जित किया। तो ड्यूस स्कोर इस समय, और बेहतरीन वापसी यहाँ पर लुकेश की। जो बढ़त हासिल थी वो बढ़त अब तब्दील होती हुई 40 ड्यूस का स्कोर। तो जो अब वापसी तो अच्छी कर रहे हैं लुकेश का, बीच बीच में अच्छा खेल रहे हैं। Out. Advantage Shivaji University. So we have Parth Patil on advantage, leading 4-2. It's a very important point for him to take that lead, and that will make a lot of difference. There's a slice on the backhand, or he's looping the ball back and he's thrown the ball out of the court. Both the players don't want to go. That's a beautiful shot on the forehand, which left Parth completely stranded. Yes. That's a beautiful, very nice shot. He looped 4 balls on the backhand, waited for a chance, and completely dug on the forehand to have a complete winner. That's a beautiful shot by Lokesh. अच्छी वापसी वहाँ पर लुकेश नेताम द्वारा। अच्छे सर्व के बाद, अच्छे पॉइंट के बाद पार्थ पाटिल को उन्होंने बैकफुट पे बांधे रखा है इस समय, और ड्यूस के जरिए अपनी खुद की सर्व पे इस समय पार्थ पाटिल। Out. ओहो, एडवांटेज। Advantage. As Mahesh, you were Pandit saying Ravi. that Parth is looking, I said, Lokesh just needs to be patient, keep the ball in play, and we can see there is a change coming up in this set also. जहाँ से आप गेम हार रहे थे वहाँ पर आप एडवांटेज की स्थिति में पहुँचे हैं। पार्थ को सोचना पड़ेगा नए सिरे से कि अपने स्वर को कैसे बचाया जाए। Fault. Second serve, important serve, serving under pressure now. Game to Lokesh यहाँ। And we are back on Game. service break. Pandit Ravi 3-4. Shankar University. Shivaji University leads by 4 games to 3. I would like to welcome our fellow commentator in English, Naveen. Naveen, a very interesting match going on between both the players, Parth and Lokesh. Parth representing Shivaji University, Lokesh representing Ravi Shankar Shukla University. Hello. 4-3, both on service right now. Let's see how the match progresses from here onwards. Thanks, Dushan. It's been that sort of a day where once again Parth has just won a couple of games in the beginning, and then he's allowed his opponent to make a comeback. That is what happened even yesterday against Delhi University's Samir Mohammad. I don't understand why is Parth not building on those initial victories of the games that he's getting in. Why does he have that habit of allowing the opponent to make a comeback? And that once again just takes me back to Rituparna Chowdhury. I'm not drawing comparisons here, but I'm just saying that killer instinct, what she has, is just unmatchable. Today in the morning, we were just so happy watching Rituparna Chowdhury of Kalinga University from Orissa, and of course Abhilasha Bista
Hey, you know what? I just met up with Abhilasha's parents as well. Abhilasha's parents were here, and they were mighty pleased with the way how the Kalinga University on a whole has been treating them, and on a whole how the Indian experience is treating them, because coming in from Nepal as a family, they've made sure they accompany their ward, or rather, or should I say, family prodigy into Khelo India University Games as well. Yeah, so when you see them, you don't have any glitch of saying that, okay, the opponent is going to make a comeback. But with Parth, you always have that issue. See, even now, Lokesh is struggling with his backhands. He is completely struggling, but Parth is not capitalizing on that. Of course, he's got that first point. Love 15. Yeah, I think the more the matches they play, they'll get tighter, they'll get better. Experience is something that you need to go through, and you need to play many, many matches. But he's definitely playing a better game than yesterday, what I can see. Yeah. Because your opponent is not so dominating as well. That might also be another reason. Yes, he's improved from yesterday comparatively, because I think even the sun is helping him out. He's setting down nicely. And that doubles victory would have given him a lot of confidence after yesterday beating Delhi University. Oh yeah, big boost. And the Ekana Sports Complex, massive setup here. Just to our left on the tennis court, we have the big important cricket stadium of Lucknow, the Ekana Cricket Stadium, and once again on the forehand finds the net. 15-30. Gives away Lokesh's first point. 15-30 now. There we see the replay, and we saw how the forehand goes onto the net. You know, Naveen, on these acrylic courts, you can really thumb the ball. You can take the rallies to a very, very different level altogether. Like you see the Australian Open, you know, when you see these pros playing, you know, Novak and all these guys, Senna, Medvedev, the rally goes up to 20 points, 30 points. Again, unforced error by Parth there. Wow. He takes the lead and then he lets it go. He's oscillating. He's not showing consistency at all. Yeah, that's the problem. Complete oscillation in whatever has been expected of him. But yeah, in the morning when we came into the arena, he looked a little unhappy with the rains that's coming on of those acrylic courts as well. Why were you so disappointed to see those water patches? But that can be drained off, so that's not a problem. And in fact, the acrylic courts get dried off the fastest. On the clay court and on the grass court, it takes a long time. But a lovely day today anyway. The temperatures are much better than what we saw yesterday. And also, again, big shout out for all the groundsmen who's done well to drain out all that water that was present. I think that was another error on the forehand from Lokesh. Yeah. But that was a nice, a good shot he tried. But yeah, lucky to get that point. 40-30, 30-40 in favor of Parth. Nice placement, but the idea was good, not the execution. And that backhand, he's struggling, Lokesh. Again, no man's land. Was out, right? It's deuce. No, that was a nice, he took a nice take. It should have been Parth's point. I'm not sure because we can't make it out on the camera. The ball was out, you know. I think the ball was in. The ball was in. Let's go with that, as the decision has been given as deuce. Fault. We don't have the thing of the points being appealed. Yeah, the reviews, yes. Yeah, that's a costly affair. Yeah, we've spoken about it. Especially in... oh, that's a good reach from Parth.
High lob, but he nicely reached on that backhand. Still goes out. Advantage now to Lukesh. University. You see again, the whole scenario is changing now. A complete scenario in terms of how you can actually go out there and have your say. For a player who's been struggling. Threw that advantage away, isn't it? He had Parth under pressure, Lukesh. Just wiles it away wide of him outside the baseline. I mean, I'll just give one prediction. If Parth wins this game, I see him lifting his game. But if he loses this game, I see Lokesh coming back in the match very strongly. And it is also going to be a little tough if Lokesh does not win this. There. He's got there, I guess. The first serve, yeah. University. Now he's got the advantage, Lukesh. Oh, it's a good serve. That's a very good serve. But if you just look at his game, there's nothing fancy. But he's keeping to the basics. He's keeping consistency. That's what is important. He's not thumping the ball or something. He's easy, relaxed. He's playing within his limitations. He's not over-trying, which is important. Yeah, very much. He's got the advantage. Can he finish it well? High lob. Just watch out on the smash. Oh, intelligent. Yeah, kept it. Very intelligently done. Nice rallies that was, but he's thrown the advantage back once again. Why did he charge towards the nets? And it was a very early call, and Parth saw that on the backhand. Just lobbed it behind him. But that was a well executed point. Very well executed point. Both the players played well. I think Parth should reach that ball. That's nice. And beautiful return and a smash. Lovely from Lukesh. Gets the advantage back. I love the way he took it on the half volley there. Nice lob, sent Parth back, and then he got that open court. Lokesh is an intelligent player. That's a very intelligent shot. Nice retrieve by Parth there. And easily on the overhead, on the backhand, he put the ball away. So yeah, you keep speaking about setting up your opponent, and this is a brilliant example once again. You know, this is what I mean by construction of the point. Yeah, absolutely. Out. And it is so correct in terms of technique as well when Lukesh does that. 4 games. The only thing he's struggling is the backhands. It's 4-all now in the set, and we are entering the 9th game. I think that's the first time. I think we are moving the same way we moved yesterday when he was playing Samir. Oh yeah. and remember that second set yesterday. It had to be a 2-pointer difference as well. They were almost there. Yeah, it was a little tricky. Parth couldn't make that bit of a comeback. Nice to see that today Lukesh has made a comeback. Yes, Lukesh has made a beautiful comeback. And he seems to be relaxed. And yes, Naveen, we also have good weather now. We can stretch the day long. Yeah, suddenly the shade has come now. We also saw so many electrolytes and salts being taken by the players, and of course, if that heat would have continued, even we would have needed some. But yeah, thanks to the sun god, he's just taken a little break, gone behind the clouds. Not too dark. That's nice. You know, I'd just like to tell the youngsters who are watching this, if your percentage of first serve is high, you save that energy to play more rallies. If your percentage is low, that means you're hitting the second serve and you're exhausting yourself that much more.
And that's exactly what I'm seeing in Parth. His first serve percentage was less yesterday, and today I'm seeing the same story happening again. Said that he's leading 15 love. Yeah. Again, those cross-court serves. Yeah, see, down the line, he's okay. He's fine. Out. Oh, was it out? I think it was. It was out. 15 And all. has he got that is a big question. Yes, he has 15 all. It was not out, it was badly out. Oh yeah, too much power. Too much power. Parth, why? It was an empty court and look at this. It's falling outside the baseline. 2.5 feet out. Oh, nice on the rock and roll from our EVS technician. Nice. That is the first time I'm seeing that. Visuals. Brilliant work from 30, the 15. PCR. We have that OB1 as a PCR converted. I'll tell you a few technical terms as well as we have that little pause in momentum. We generally have, a room that has been set up which is called the production control room. But every time when Didi puts out a nice production like this, nice broadcast, especially in Khelo India University Games and the national games, they bring out the OB1 itself. They're not bothered about what is the setup, what is the arena providing them as a separate room. The OB1 with the conversion of a PCR is a fabulous technology, and take it from me, I've been calling many games at different platforms, different levels. Yes. I haven't seen a OB1 utilized so nicely. Nice slice. Oh, that's a beautiful lob, and he's going to hit it under the legs. And that's a lovely point. That's a beautiful point played by Lokesh, and very intelligently played by Parth. My heart goes 40, out to 15. Lokesh. Really, after going back and returning it well, it should have been Lokesh's point. I really feel pity for it. There you go. He ran back. I think he got it under his legs. Yeah, brilliant return. And this is just cruel, yeah. Dushyant, this is very, very cruel on the part of tennis. Oh. I have seen so many players hitting winners also between the legs. Oh. Net fault. But exciting that Lokesh is making a comeback. Big one for Pandit Ravi Krishna Shukla University. Parth is again 40, gone back to his old 30. game, giving a double fault and asking him to make a comeback again. Yeah, see, why? Because it's cross-court. Yeah. As simple. I expected it from Parth. I mean, nothing taking away from that lovely talent as Parth Patil, but the cross-court is an issue with him, and he needs to go back and work on that. And even yesterday, he had that problem, serving from the right side of the court on either side. See, down the line is okay. He's fine. He does well. Oh, yes. Wonderful. It's too good. Game. Lokesh, even Shivaji with the jump, he was University. charging towards the nets. Couldn't get it. Shivaji University That's a nice leads finish by Parth. by Very 5 nice games to finish. 4. Lovely cross court. Lokesh just did not judge the ball, and he knew the only shot he could. But just see how he's approaching the net. He's just jumping without any direction. Yeah, And he knew he has to play a volley, but he was just trying to grab the ball. You don't grab, you see the ball and anticipate it correctly. with that brilliant one, he's got that game 5-4 now. So 2 more games to go. And if Lokesh can make a comeback, that's the 2 games I'm talking about. And that'll be another difference of 2 games to win the set. And Parth will want to finish it. He does not want Lokesh to make a comeback. What has changed for Lokesh is, I mean, talking on the comeback lines, he's tried to attack the net 1. 2, he's got himself into good positions. He's attempting whatever Parth is trying to feed him off. So that's very good of Lokesh. He's gauging and guessing Parth's returns. See, in tennis, what I see a lot of these players, potentially they may be very good. 3, So at times they'll 2, play brilliantly, 1. then they'll get their games down. So they the bar keeps moving up and down. But what I'm seeing in Lokesh, that he is a good player and he's playing within his limitations. Okay. I don't see him oscillating the way Parth is oscillating.
And that is really affecting. If Parth can keep up to his game, I think he will definitely be a much stronger player. Keeping up only on those serves, he's got that issue, and we will have to find out today in the doubles when they play on. Of course, it's the net for service, equal number of serves for both the partners. But I want to see if Sandesh, because yesterday we actually missed out on noticing it, if Sandesh can avoid Parth on the serve when he goes cross court. And if Sandesh can take all those cross courts, I think they did it yesterday nicely. It's a very important point. You know, when we do the men's doubles, when we see the men's doubles, we will have to see that. If Parth is avoided from by Sandesh, covered him nicely when the cross court option of the serve comes in and he takes it. And then when the down the line court serve, he can give it to Parth. That's a very important point that we'll have to notice. Yeah, but they were combining quite well yesterday, Naveen. But yeah, they must have a change in strategy. But said that, now I see Parth leading love 15. Unforced error by Lokesh. No, 15 all. We always keep speaking about, I mean, see, this is again on the player's comfort and on an individual. But I'll tell you something on my experience, because it's more nice that I put out my story out than compare any other story as well. In heat, especially when we always used to be on the field and we used to play multi-format games, 4-day games, the red ball cricket that I'm talking about. Nice slice, good smash from Lokesh. Ran in close towards 30, the net, 15. got the opportunity, and it's 30-15 now. Let's conclude on what I was trying to say. Yes, we always keep hinting on players wearing a headgear, head protector, eye gear, everything. But under the sun, I'll tell you something. If anybody will probably agree with me, we were asked to use a lot of oil on our head. That reduces so much heat, that reduces eye burn. Even when the helmet or even when the caps were on, with a little bit of oil exactly on top of your head, it cools your body down so much under sun. Oh, that's a wrong shot on the forehand. Is it the coconut oil? Yes. 30 all. Very important. Coconut oil is so good, and that's comes from the culture that we always been in together from Karnataka, Bangalore, of course Tamil Nadu, Karnataka, and even Kerala, for that matter of fact. We have that coconut oil rubbing into the hair, and even when you have your hair wash days, if you have a match day, I never missed out on applying that, and it used to keep your body temperature so cool. I've been noticing even that, Mahesh, of course, in this arena. 40, I don't 30. see any player being a lover of any oil application on the head. But I saw one player from Anna University. University. Yeah, putting some cream on his face. Oh yes. Oh yeah, it would be oil mix. It would be a coconut oil mix. Tell you what, coconut oil is good for your stomach and for the head as well. If you cook in coconut oil, Game Lokesh. a lot better in shape, and Lokesh has come back. It's 5 all now in this game, and it's going to go to the 7-5. We're still not happy, Parth, with some decisions being called on the court by the chair umpire, and it is going to be a longer set as well. This is going to be a long drawn-out match, Naveen, I can tell you for sure. Because this boy Lokesh is very relaxed. He won't do anything different, but he will carry on at the same pace. If Parth can increase his percentage of playing of unforced errors, then things may be different. Otherwise, he's not going to leave him that easily, I can tell you for sure. Yeah, that is there. Again, the cross-court serve, testing Parth. He's got the opportunity now. Nice forehand, wrong backhand from Lokesh. That is the big problem for Lokesh. The backhands not working well. As we will be getting ready for a longer set. Mahesh comes back rejuvenated and replenished into the commentary box as Dushyant walks out for a small little break. 15 love, Mahesh. Ready for a longer set? बिल्कुल लंबा चलने वाला सेट नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से वापसी की वहाँ पर लोकेश ने
और बैकफुट पे ला दिया वहाँ पर पार्थ को। पार्थ कल के जैसे खेलते हुए नजर आए। पहले तो अच्छी स्टार्ट उन्होंने ली, 3-1 की बढ़त उनके पास थी, लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे लोकेश ने वो सारी जो बढ़त थी उससे निरस्त किया और स्थिति अभी इस समय 11वें सेट में 15-15 अंकों के साथ बराबरी पर है। Another huge word coming out, निरस्त. Hey, you tell me something. What is your hold on the qualification lines of Hindi? Have you done your MA or something in Hindi language literature? नहीं भाई, वो इस तरह से नहीं है। BCom, LLB, DLW, GDCA, CIIB. I have a lot of because I'm a general manager, ex general manager of a bank. ऐसा कुछ नहीं है कि मैं हिंदी में PhD किया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। Now I know why you keep asking so many questions. LLB. Practicing advocate, you can say. Good return on the forehand. 15 all now. 30-15 in favor of Parth. Yeah. LLB what? Crime lawyer you were? Yeah, civil. Civil, right. और यहाँ पर काफ़ी दूर, काफ़ी शरीर से अपने दूर खींचते हुए चले गए थे, लेकिन वापस नहीं कर पाए। और अच्छी शुरुआत के बाद यहाँ पे पार्थ ने वो एडवांटेज गंवाया जरूर है, लेकिन अब इस गेम में 11वें गेम में कम से कम 30-15 के साथ आगे। तारीफ करनी होगी दूसरे तरफ से लोकेश की, जिस तरह से वापसी उन्होंने की। ओह बहुत ताकत। ओ हो कुछ जरूरत नहीं थी, खाली क्षेत्र था, बाईं तरफ खेल सकते थे, लेकिन जल्दबाजी में शायद उन्होंने सोचा कि पार्थ बाईं तरफ दौड़ रहे हैं, दाहिनी तरफ खेलने की कोशिश की, हड़बड़ाहट में बाहर फोरहैंड का इस्तेमाल था। Not only the backhand, on the forehand he is very strong, but this was too strong. It was just going outside. He wanted to give it a slap, just couldn't keep it inside that service line. Very important. 40-15. And after this game, you've got another game to conclude the set. Now Parth, cross-court serve. He knows it. He's taking a bit of time just to cool his nerves down, just to cut out on momentum. Error. Yes, cross-court serve expected. First fault will always be evident. Watch out, Parth. Just don't commit a double error here. Thankfully not, and he gets a point. That's it, 6-5 now for Parth. 1-6 games. Another game to go in the set. If Parth gets it, and he gets it, or if Lokesh comes back, then we carry on. Not a good return. Again on the backhand there, Mahesh. बिल्कुल, और अच्छी तरह से वहाँ पर ये वापसी की। 6-5 अगर यहाँ 6 ऑल होगा तो फिर गेम आगे बढ़ता जाएगा, और पूरी थकान जो खिलाड़ियों की वो इसी पहले सेट में ही मैं समझता हूँ कि गुजरती हुई नजर आएगी, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहेंगे लोकेश, जो कि पार्थ जो कि बहुत आसानी के साथ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन वापसी करने के बाद लोकेश ने वो एडवांटेज छीन लिया जहाँ तक पार्थ का सवाल था। लेकिन ये पिछला गेम जीतकर 6 के मुकाबले 5 गेम से आगे इस समय पार्थ। Just for a matter of conversation, nothing on the lines of whether will it happen or not. I always feel, sometimes if you practice both hands, like if you're ambidextrous on the backhand and forehand, of course you will not have so much time to shift your rackets with the pace of the ball coming at you, but you never know if you can just pull that off and be an ambidextrous sort of a player. Your backhands will never irritate you. I'm just saying this because Lokesh is completely struggling on backhands. Not even a single backhand has given him good points. But this was the moment of this set. I will, if I was a chair umpire, which I'm not, thankfully, I would have given it to Lokesh. That was a very, very good return, but intelligent one from Parth to pull it across. So yeah, so if you can have that right hand, left hand going towards in the same pace and the same direction. Of course, it comes with a lot of practice. Nevertheless, it will also add another arsenal in your weapon. I mean, another armory in your weapons arsenal. बहुत फ्लेक्सिबिलिटीज होनी चाहिए, बहुत फुटवर्क सही होना चाहिए, और उसके बाद ही इस तरह के सभी गुणों को निखारा जा सकता है। 6-5 सर्व करते हुए इस समय लोकेश।
मौका यहाँ पर देखना है कि अंक ले पाते हैं नहीं, हल्के से ड्रॉप किया और गलती करने के लिए विवश किया। 15 लव। बहुत ही चालाकी के साथ लुकेश ने रफ्तार कम कर दी थी खेल की, हल्के हाथों से खेला, नेट के पास लाया वहाँ पर पार्थ को, और जैसे ही देखा कि बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं, बिल्कुल शरीर पर खेलकर वो अंक उन्होंने अर्जित किया फोरहैंड से। I was just having that conversation of ambidextrous. Ambidextrous is a player who can play with both hands. I mean, predominantly if you are a naturally right-hander, yes, you practice in your left hand, because we've seen that in badminton. Where generally people, when they practice, I mean, I'm not hinting at any player, but when you keep practicing, people also try to play left-handed, and you also try to just have a little bit of a go on your left shoulder as well. But that can be done even in tennis. It's not against any rules. But with the pace of the cock, or even with the pace of this tennis ball, it will require a little bit of a special talent. बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज़्यादा शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ता है। आप जानते हो कि इस छोर से उस छोर पे गेंद डालने के लिए कितनी ताकत लगती है, और जितनी ताकत जो राइट हैंडर है राइट हैंड का इस्तेमाल करके निकाल सकता है, उतना वो लेफ्ट हैंड से नहीं निकाल सकता। Yeah, correct. No, but no, I'm not talking about. You can play against the wall. No, I'm not talking about the serve, Mahesh. I'm just saying on the returns, especially when you have given the backhand, and especially when you're being sliced and chopped near the nets, those things, because we've seen where the players have struggled covering the angle, covering the length of the court, and even sometimes the breadth. There you see, again forehand straight into the net. Yes, I agree your point completely, where the power might not be that clear in your natural hand, whether it's right or left. But if you can practice it, at least just lob it instead of missing it. Instead, with the backhand, if you can just lob it on your if you're a right hander, if you can lob it on your left, that'll be a very, very good innovation in your game. काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटीज़, रिफ्लेक्सेस और काफ़ी जो एक्सरसाइज है वो करते हैं खिलाड़ी को इस तरह के गेम में बनाए रखने के लिए, तो वो फ्लेक्सिबिलिटीज़ वो प्रैक्टिस के साथ ही आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, और ये भी जोड़ लीजिए एक उसके साथ, just to make yourself more competitive. 40-30 स्कोर इस समय। लुकेश वापसी की गुंजाइश अभी भी बरकरार रखे हुए हैं और विवश कर रहे हैं। और ये क्या था, क्या था? How will you describe this shot? वॉली थी लेकिन ले नहीं पाए, बिल्कुल जैसे क्रिकेट में ग्राउंड शॉट खेलते हैं उस तरह से ग्राउंड शॉट खेला, नेट पे खेल गए। और and this is going to go even more lengthier than expected. Right, Lukesh gets a comeback. Backhand, Parth suffers for the first time in this game and gives away 6-all now. Lukesh is not letting it go. He is feeling the heat, he is feeling the pressure. He knows that he can survive 2 more games. I think never from yesterday we have not seen a 6-all. We've seen a 5-all. We have not seen a 6-all. 13वें गेम में मुकाबला चल रहा है। एनर्जी पूरी तरह से डाउन हो जाएगी इस खेल के इस सेट में ही दोनों खिलाड़ियों की, और वो फिर यही होगा कि जिसके पास स्टेमिना होगा, एकाग्रता होगा, मजबूती होगी लंबे खेल खेलने की, वो डोमिनेट कर सकेगा अगले सेट में। लेकिन ये सेट निश्चित रूप से अब जो 13वें गेम में पहुंच चुका है, मैं समझता हूं कि पूरी तरह से खिलाड़ियों की ये योग्यता का मूल्यमापन किया जा रहा है। यहाँ पर डाउन द लाइन खेलने की कोशिश, लेकिन 2-0 Shivaji University score. I think they're going in for a tiebreaker. I think they're going in for a tiebreaker now, because 6-all. So they want that tiebreaker to be happening. 2 in favor of Parth, and very importantly, all that has been done to keep things under control is just allowing Parth to make a big comeback. 3 love now. अगर गेम के पॉइंट के हिसाब से 2-2 पॉइंट के हिसाब से अगर खेलते तो बहुत लंबा खेल खींच जाता। शायद टूर्नामेंट के जो रूल है उसके हिसाब 6-ऑल होने के बाद जो आपने टाई ब्रेकर की बात की, शायद वही होगा। 3-0 की बढ़त फिर भी पार्थ के पास मौजूद है। Yeah, the first to get to probably 6 points will be adjudged the winner of this set. That's what the tiebreaker is. 1 to Lukesh now. Whoever gets to 6 points will be adjudged on that set winner.
Again, finding it on the nets. लोकेश, पार्थ पाटिल यहाँ पर, ओहो काफ़ी रफ्तार तेजी के साथ मारने की कोशिश, लेकिन हमेशा की तरफ नेट पे फॉल्ट करते हुए वहाँ पर पार्थ पाटिल. Cross court. That is a problem. Oh. Double fault. There we go. 2 to Lukesh and 3 to Parth. 3-2. He has that big issue of cross court serves. Double fault again from him. Parth and Lukesh will love it. Tiebreaker. First to get to 6 points. Will be getting this set on. तीन दो की बढ़त इस समय पार्थ के पास, लेकिन सर्व इस समय लुकेश. 3-all. 3-all now, even in the tiebreaker. First to get to 6 points is what we are trying to say, and also with difference of 2 points on the tiebreaker. Doesn't get it. And probably they will take a little bit of a breather. That's most needed. Brilliant forehand, but just going outside, and Lukesh will celebrate that one. Nice serve. Look at the way he puts it down the line, and does not allow Parth to get elevation. It was closer to his body, and that's why forehand not coming through. 3-3 अंकों के साथ बराबरी पर इस समय दोनों खिलाड़ी. अगर बराबरी पर ही रहते हैं 6 पॉइंट के बाद भी, तो क्या सुपर पॉइंट होगा क्या, जिस तरह से सुपर ओवर होती है. लेकिन मानना पड़ेगा कि दोनों ही खिलाड़ियों ने बड़ी कटिबद्धता के साथ एक दूसरे के साथ कड़ा संघर्ष किया, मुकाबला किया है यहाँ पर. और 6 ऑल के बाद ये टाई ब्रेकर में 3-3 अंकों के साथ दोनों खिलाड़ी बराबरी पर चल रहे हैं. यानी दोनों ही खिलाड़ी समतुल्य हैं, दोनों की ताकत एक समान है. कोई बैकहैंड अच्छा खेल रहा है तो कोई फोरहैंड अच्छा खेल रहा है, कोई सर्विस में गलती कर रहा है तो कोई सर्विस में पॉइंट अर्जित कर रहा है. तो इस तरह की खेल में सारे दोनों खिलाड़ी लगे हुए हैं, जबकि लुकेश इस समय 3-3 की बराबरी के बाद. Commits that fault on the first serve. Lukesh, brilliant comeback, I should tell you that. Couple of games in the set was won by Parth and nicely smashed across. 4-3. Good bit of a kill that was coming in from Parth. बिल्कुल कंधों का इस्तेमाल किया, खाली जगह देखी और वहाँ पर उन्होंने खेला. हालांकि कमिट हो रहे थे बाईं तरफ, दाहिनी तरफ से खेलकर क्रॉस कोर्ट निकाला उन्होंने. और ये मुठ्ठियाँ मींचते हुए उन्होंने निर्धार किया कि हाँ अब मैंने सही किया है. तो 4-3. Also fault even on the down the line serve. Ball down, ball boy. It's taking a lot of energy off these two players. What a set, what a fight that we are watching. Couple of sets, couple of games in the first set was won by Parth, and then Lukesh comes back, double fault. 4-all now. So the tiebreaker also keeps extending. Whether it's good play, good period of play, or whether it's the errors, we'll have to really forget about thinking it and just enjoy this. जहाँ तक सर्व का सवाल है, यहाँ तो मैं समझता हूँ कि कमजोरी रही है पूरे खेल में पार्थ पाटिल की. पहले ही सर्व तो नेट पे खेलते ही अपनी एनर्जी भी वेस्ट करते हैं, और उसके बाद देखिए फिर वहाँ पर नेट पर खेलते हुए अपनी एनर्जी, शक्ति और एकाग्रता भी भंग करते हैं. तो ये नहीं होना चाहिए. उन्हें प्रैक्टिस इसी बात की करनी चाहिए कि पहली सर्व ही उनकी राइट हो. Yeah, in the tiebreaker, each player gets 3 serves. Oh, that's very, very wide. Again, struggling on the backhand. So every time when you notice there is something which is not right with the player, that doesn't get corrected. And I feel very, very happy when I keep saying this always, when players prove me wrong. You know, when on commentary, if we predict something, or if we comment on something, and when the player does the opposite of it, I will be the first person, more than his coach, let me tell you this, more than his coach, I'll be the first person to be really happy in any format or any sport.
And backhand is still not working out for Lukesh, and that was being played out. Make it 5-all now. Oh, 5-all. What are these guys up to? आज की शाम मैं समझता हूँ इन्हीं के नाम रहेगी। यहाँ पर ज़्यादा कुछ दूसरे गेम्स इस कोर्ट में वो होने नहीं देंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा चलता हुआ खींचता हुआ मुकाबला आगे बढ़ रहा है। और 6-all के बाद इस टाई ब्रेकर में भी 5-5 अंकों की बराबरी हुई है। तो दोनों ही खिलाड़ी कदम से कदम मिलाकर यहाँ पर एक दूसरे के साथ संघर्ष कर रहे हैं, और क्या बेहतरीन मुकाबला देखने को मिल रहा है ये लॉन टेनिस का। This tiebreaker is not looking like a tiebreaker. It's almost looking like a game format. Yeah. You know, where you're going on and on and on. That's how they've been playing. 5-all again, the first fault there from Lukesh Neetham. But good fight back. I have to appreciate that one from Lukesh. Puts it away, 6-5. And Lukesh will just need one more point. That's in the difference of 2. There we go, first play to get to 6. There's one more point and he will seal the set. गलती वहाँ पर काफ़ी बड़ी गलती की है लोकेश पार्थ ने। दाहिने हाथ से काफ़ी शक्ति का इस्तेमाल किया और फोरआर्म जो खेला उन्होंने पूरी तरह से बाहर की तरफ नियंत्रित नहीं कर पाए थे स्ट्रोक को। See, generally, you know, the table tennis and lawn tennis. Oh, that's it! That's it! That is what he wanted, Lukesh. 6-all. Wow! After losing 2 games in the beginning and coming back to fight it out, even in the tiebreaker, 6-all is a big fight from Lukesh, and that was once again put wide of the baseline. That's what I was trying to say. Table tennis and lawn tennis. See, sometimes when you return on the serve, what happens is you play that, you play that smash, especially in table tennis. There you go. Of course, in the forehand on lawn tennis, you need to play it on top of the ball. You just need to, make sure you keep the ball down inside. But you have that 3 feet tall net which will have to cross. But that is where your skills are. Meet the ball on your racket, on the center, and then try to, smother it over. Nice little smother, and you will try to keep it under the baseline. So that is what they'll have to practice doing it. Yeah, again, see, that is why you see, greats like even Lance Klusner or even A.B. de Villiers currently. I mean, of course, even he's retired now. They play multiple sports. It's not just cricket, it's more of rugby, it's more of baseball. So different skill sets comes across, and I've seen this so much from the Proteas players every time. And recently I was into one of a tournament where the local first-class players came from South Africa to play in Karnataka at Kalburgi. And even they, at the grassroots level, that was wide again. That was wide again. Again, see? The smother. If he had that, it would have been inside. Ravi Shankar's University. Table tennis teaches you that smothering of the returns. So yeah, just speaking about one player who's a first-class player, because he is also Matthew de Villiers, but nothing to do with A.B. de Villiers. He's not a relative. But he also plays 4 or 5 sports. Rugby, football, and then he has a little bit of a baseball also. He loves everything. And different skill sets and different sports, you never know what comes handy. Forget going to South Africa, Mahesh. I'm sure we know what Kabaddi gives to us. Kabaddi is a culmination of 3-4 sports together in itself. First itself is Kusti, wrestling, it comes into it, Kushti and wrestling, it comes into it in Kabaddi. And don't forget the strategies that work on where you need to play chess. 7-all. 7-all now. बढ़ते ही जा रही है। ये कहते हैं ना कि जो खेल अब समापन की तरफ अग्रसर ही नहीं हो रहा है। ये हनुमान जी ने अपनी धूम जिस तरह से बढ़ाई थी वहाँ पर लंका में, रावण के जब धूम में अंगार लगाने की कोशिश की थी, तो ये धूम जो बढ़ती चली गई थी, उसी तरह की ये धूम अब जो मैच की है, पॉइंट की रैली की बढ़ती चली जा रही है। 7-7 अंकों के साथ ये मैच बराबरी, बहुत संघर्षपूर्ण मुकाबला खेला जा रहा है। फिर यहाँ पर मुठिया मींजी वहाँ पर 8-7 और एस के तौर पे वो निकले, क्योंकि वापसी नहीं कर पाए, पहुँच भी नहीं पाए थे वहाँ पर पार्थ। और 8-7 का यहाँ पर अंकों की तालिका, 2 अंकों का फासला ज़रूरी है। तो निश्चित रूप से अब यहाँ पर लोकेश
ये अंक लेकर आगे बढ़ना चाहेंगे। 7-8। Good ace from Lukesh on the previous serve. It's down the line, so not a problem for Parth on the first serve. That's it. That is what Lukesh wanted. What a fight. What a comeback. 9-7, and he sealed that set brilliantly well in the tie-breaker. He's got 7-6 on the tie-break. Wow, that's massive. After losing first couple of games, he's come back to fight it out. It was 5-all, then 6-all, then they went in for the tiebreaker. It was almost very close, and it was 7-9 to Lukesh. This is what you want to see for exciting hockey. Once again, getting his forehand properly placed. बहुत ही चालाकी के साथ और बहुत ही फुर्तीले अंदाज में वहाँ पर अंक अर्जित किए। थोड़े से नाराज होते हुए वहाँ पर पार्थ, लेकिन कुछ नहीं सकते थे क्योंकि लुकेश ने अपने मन मस्तिष्क को शांत रखा और एकाग्रता के साथ वापसी की। पिछड़ने के बावजूद इस खिलाड़ी ने अपनी एकाग्रता को भंग नहीं होने दिया। अपने कॉन्फिडेंस को उन्होंने बरकरार रखा। पसीने से पूरी तरह से भीग चुके हैं खिलाड़ी वहाँ पर लुकेश, और पूरी तरह से वहाँ पर जो मैच ऐसा लग रहा था कि काफ़ी आसानी के साथ बढ़त बना लेंगे पार्थ पाटिल, वहाँ उन्हें संघर्ष करने के लिए विवश किया और 6-6 के बाद टाई ब्रेकर में 9-7 अंक हासिल करके 7-6 से वो मुकाबला उन्होंने अपने पक्ष में किया। पहला सेट पक्ष में जाता हुआ जीतते हुए वहाँ पर लुकेश नेताम। अच्छी वापसी पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी की शिवाजी यूनिवर्सिटी के खिलाफ। अच्छे बैकहैंड, अच्छे फोरहैंड का इस्तेमाल, और ये नेट पर टाइम वापसी के अंदाज में एक अंक जो अर्जित किए हैं इस टाई ब्रेकर में। बहुत अच्छा स्ट्रोक था उनका, बिल्कुल शरीर पर खेला था दौड़ते हुए पार्थ पाटिल के बीच में। हाँ, आप तारीफ करनी होगी इस हीरो की, इस खिलाड़ी की, जिसने ये पहला सेट 7-6 से जीता, वो भी टाई ब्रेकर में 9-7 अंकों का हासिल करते हुए। नेक्स्ट मैच ऑन कोर्ट नंबर 6 स्पोर्ट्स स्टेडियम पर जो मुकाबले खेलेंगे उसमें सबसे लंबा खेला गया ये सेट, और ये मुकाबला जितना लंबा हुआ है मेरे साथ में कमेंट्री बॉक्स में ज्वाइन किया मुझे यहाँ पर दुष्यंत शौके साहब का। Next match on court 5, Bharatiya University versus University of Delhi. Bhupati, Rishi versus Yash and Mohammad Sameer. Chair umpire, Sekhar. What do you feel the umpire would be telling them right now? इस समय अंपायर यही सजेशन देंगे भाई अपने क्या कह सकते हैं कि भाई मैच आप अच्छी तरह से खेलें और किसी तरह की कोई रुकावट ना हो, क्योंकि खेल काफ़ी लंबता जा रहा है, काफ़ी समय गुजर चुका हो। मैं तो सोच रहा हूँ कि सर इसके बाद में जो मुकाबले यहाँ पर होने हैं शायद कुछ मुकाबले शिफ्ट भी करने पड़े दूसरे ग्राउंड पे, क्योंकि ये काफ़ी लंबा खींच गया है मुकाबला, काफ़ी देर से चल रहा है और अभी तक पहला सेट ही यहाँ पर खेला गया है। सेकंड सिंगल शिफ्ट हो सकता है बट डबल शिफ्ट नहीं होगा। सेकंड सेट पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी to serve. I request Chair Umpire Santosh to report on the tournament desk immediately. First game. I repeat. Fifth love. Lukesh is playing very intelligently. He moved Parth in the front, lobbed the ball over him. See, that's very nice. Got him to the net, lobbed it over his head, and made him difficult. Made it difficult for him to play a volley on that. 15 love. That's 15 all. Not required.
15 ऑल, बट महेश इस सेट के बाद लोकेश को तो बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जब आप इस तरह के मुकाबले जीतते हैं और कड़े मुकाबले जीतते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई हो जाता है, आपके इरादे मजबूत हो जाते हैं और आप में एक इस तरह की भावना उत्पन्न होती है कि आप अपने विरोधी को चारों खाने चीत कर सकते हैं और ये विश्वास आपको और बेहतर खेलने के लिए प्रोत्साहित करता है, आपका आत्मविश्वास दुगना हो जाता है। 15 लव स्कोर इस समय और गलती वहां पर 15-30 हल्के हाथों से खेलने की कोशिश और 15-30 मेरे बैग से बॉल निकालो। हाँ इनका लोकेश का सर्विंग स्टाइल बड़ा अच्छा है, सिंपल सा है। डबल फॉल्ट 15-40 क्या हो गया अचानक? वो वाला इतना अच्छा खेलने के बाद इस गेम में लगातार अंक उन्होंने दिए हैं। थोड़ा सा उनका मैं समझता हूं कि जो एकाग्रता है थोड़ी सी भंग हुई है, अन्यथा जब आप विरोधी के ऊपर जब हावी होते हैं तो किसी भी खेल में कहा जाता है कि इतना हावी हो जाए उसके ऊपर कि फिर वो ऊपर मुंडी ना उठा पाए, लेकिन यहाँ आप हावी होके खेले, दबा के रखा अपने पार्थ को और इस गेम में बहुत आसानी के साथ अनफोर्स एरर करते हुए आपने अंक दिए हैं और एक के बाद एक अंक देकर आपने मौका दिया विरोधी को वापस गेम में वापसी करने। यही तो जब बच्चों को प्रोफेशनल, ये आप इन्होंने 4 अनफोर्स्ड एरर्स करे हैं। अब जैसे इन बच्चों को जब इनका एनालिसिस करते हैं कोचेज, इसमें जब साइकोलॉजिस्ट बात करते हैं तो इनकी ब्रेन मैप रीडिंग करते हैं कि क्यों इन्होंने करा है, इसका भी एक सुधार होता है एंड इट इज़ अ वेरी टेक्निकल वे टू सॉर्ट दिस प्रॉब्लम। ये सारी सुविधाएं यहाँ भारत में इस तरह की यूनिवर्सिटी गेम में क्या उपलब्ध हो सकती है भविष्य में या है ये सब चीज़ें, क्योंकि ये सब चीज़ों का मूल्यमापन अगर हो एक सही तरीके से तो खिलाड़ी और निखर सकता है। ओहो हो अच्छा खेल, लेकिन उसके बाद बाएं दाहिनी तरफ जैसे ही कमिट हुए, फोरहैंड का इस्तेमाल किया, पीछे जाने के लिए विवश किया शिवाजी यूनिवर्सिटी और फर्स्ट गेम अच्छी तरह से वापसी करने के बाद पार्थ ने यहाँ पर गलती की है फोरहैंड के खेलने साथ नहीं। कभी कभी क्या होता है, बॉडी थोड़ी रिलैक्स हो जाती है, जब बॉडी थोड़ी रिलैक्स होती है तो रिदम पे इफेक्ट होता है, रिदम पे इफेक्ट होता है तो उससे भी गेम पे थोड़ा आपका प्रभाव आता है। ये नहीं होना चाहिए क्योंकि आप लगातार जैसे कहा जाता है ना किसी भी खेल में कि जब दबाव बनाओ तो दबाव बनाते चले जाओ। अगर आप जीत रहे हैं, आप गिव अप करते हैं या आप किसी भी तरह से अपने बॉडी लैंग्वेज को इस तरह से अस्थिर कर देते हैं कि भाई ओके अब मैं जीतने ही वाला हूँ, तो फिर वो कोई भी अति विश्वास जो है आपको मुसीबत में डाल देता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस तरह का अति विश्वास दिखाया वहाँ पर लोकेश ने बहुत बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया, लेकिन पिछला गेम वो स्तर का नहीं था जो स्तर का टाई ब्रेकर में उन्होंने खेल किया। फिलहाल 1 के मुकाबले 0 से बढ़त हासिल है इस दूसरे सेट में। पहले गेम में यहाँ पर पार्थ पाटिल के पास Let us see how सर्विस ब्रेक, let us see how Parth takes it forward, because इनका महेश एक आदत है जब दूसरा डाउन होता है तो वो अपना गेम भी डाउन कर लेते हैं साथ साथ। कल इस तरह की काफ़ी प्रदर्शन उनका देखने को मिला था। पहले गेम में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था मोहम्मद समीर के खिलाफ, लेकिन बाद में वो डाउन हुए। लव 15 लव 15 डबल फॉल करके बैठ गए, अपन बात ही कर रहे थे और उन्होंने ये चालू कर दिया वापस। करिश्मा उनका जो है वो रंग ला रहा है यहाँ पर। वो दूसरे की प्लेयर के साथ पेस रखना चाहते हैं, वो अपने वो उस रास्ते से हटना ही नहीं चाहते हैं। फिर गलती वहाँ पर लव 30 पार्थ के द्वारा ये डबल गलती जो हो रही है उसकी वजह से लव 30 स्कोर इस समय। अब वो एक सेट डाउन है, उन्होंने ब्रेक करा है, अब उनको कैपिटलाइज करना है, वो करना ही नहीं चाह रहे। सामने वाला जैसा खेलता है शायद वैसे ही खेलने की एकदम सही बोल, एकदम सही फरमा रहे हो आप। नेट पर उलझते हुए यहाँ पर जो उनकी खामी रही है, कमजोरी रही है, जो प्रमुख उनका जो निगेटिव देखने को मिला है इस खेल में,
नेट पे उलझना दूसरी बार, फिर नेट पे उलझे और अंक दिया। ये मैं समझता हूँ कि बहुत प्रयत्न करना होगा, बहुत कोशिश करनी होगी वहाँ पर पार्थ को इस गलती से निजात पाने की। आप डबल फॉल्ट, लगातार डबल फॉल्ट कर सकते, 2 पॉइंट आपने खड़े खड़े वहाँ पर दे दिए और गेम पॉइंट पे पहुँचा दिया अपने प्रतिपक्ष में खड़े हुए खिलाड़ी को। और लव 40 कतई कोई इसे समर्थन नहीं देगा भाई। आप सर्व जो है आप कम स्पीड से करें, आप भले ही ज़्यादा उसमें जो कहते हैं ना कि ज़्यादा उसमें तेजी लाने की कोशिश न करें, लेकिन कम से कम सही तो करें। आप डबल फॉल करके बैठ गए, आपने लिटरली यू हैंडेड ओवर द मैच ऑन अ प्लेट टू तोहफे पे दिया हुआ ये गेम है। 1 गेम ऑल, ये गेम तोहफे पे दिया है। वहाँ पर लड़कर आपने पहला गेम जीता और दूसरा गेम आपने डबल फॉल्ट करके 3 बार में वो अंक दे के ये जो मैच खेल रहे हैं इसकी जब रिकॉर्डिंग इनके कोच इनके साथ एनालाइज करेंगे तो इनको कितना बता सकते हैं कि कहाँ का इनका प्रॉब्लम है गेम में। आउट। कहीं ऐसा ना हो हमारी कमेंट्री सुनने के बाद हमें किसी तरह से कोई कमेंट्स करे वो कि भाई आप कौन होते हैं इस तरह से मुझे सुझाव देने के लिए। लेकिन एक कमेंटेटर जो है एक न्यूट्रल ये होता है, जो हो रहा है घटित हो रहा है उस पर वो कमेंट्स करता है, उस पर अपनी राय प्रकट करता है। वो कोई कोच नहीं है, कोई मास्टर नहीं है, लेकिन हाँ खेल को नज़दीकी से देखने वाला एक व्यक्ति है जो उसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये डिस्क्रिप्शन निश्चित रूप से उन्हें काम आएगी, हमारी कही हुई बातें शायद उन्हें किसी तरह से सुधार करने के लिए विवश करेगी। नहीं, इम्प्रूवमेंट इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस शुड बी टेकन पॉजिटिवली। सेड दैट सम नाइस हिटिंग बाय पार्थ, ही इज मेकिंग द अपोनेंट मूव। दैट्स अ ब्यूटीफुल पासिंग शॉट बाय लोकेश, अ लवली पासिंग शॉट ऑन द बैकहैंड। लव 30 low 30. I think the ball is out. Love 30. It looked right to me, but I think the ball is out. Low 30 score. But that's a lovely shot down the line, but unlucky though. अच्छा बैकहैंड का इस्तेमाल था, फोरहैंड का इस्तेमाल था और अंपायर की तरफ देखा कि आउट है। यस वो आउट है और इस तरह से यहाँ पर रिव्यू का नहीं है ना, तो दूसरी जगह कोई रिव्यू ले लेते हैं इसको। लव 30 और फिर गलती यहाँ पर इस समय जो तूने की वही मैं करूँगा, शायद लुकेश भी वही दोहरा रहे हैं। अभी सेकंड सेट में दोनों प्लेयर्स अपनी सर्विस ही जीतना चाहते हैं। अब ये थर्ड गेम चल रहा है सेकंड सेट में और ऐसा लग रहा है कि थर्ड गेम भी ब्रेक होगा। लव 30 स्कोर इस समय, लव 40 पे पहुंचता हुआ स्कोर। लगातार अंक वहां पर दिए हैं लुकेश ने। तोहफा देने का भारतीय परंपरा रही है। दुष्यंत और इस तरह से ये आउट खेला वहां पर या गेम शिवाजी यूनिवर्सिटी गेम पक्ष में 2 games to 1 पार्थ के सेकंड सेट से लगा कि शायद बाहर गई है, लेकिन नहीं, राइट था। और ये राइट ऑन द लाइन, दैट्स अ गुड शॉट। तो 2 के मुकाबले 1 अंक से यहाँ पर पार्थ पाटिल अभी भी आगे हैं। जो तोहफे की बात कर रहे थे हम, दिवाली में बहुत से तोहफे दिए जाते हैं, तो खिलाड़ी भी एक दूसरे को गेम देते हैं, लेते हैं। पर पिछला गेम आपने मुझे दिया भाई, ये गेम आप ले लो। शायद ये भावना जो हमारी है, भारतीय परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, खेल में भी नजर आ रही है। ये सारी जो की बातें हैं, इस केवल थोड़ा सा कमेंट्री बॉक्स अनिरुद्ध कुमार ऑफ हल्का करने मद्रास यूनिवर्सिटी, अनिरुद्ध कुमार ऑफ मद्रास यूनिवर्सिटी टू रिपोर्ट टू कोर्ट नंबर 6 इमीडिएटली। 7-6 से जीता था वहां पर लुकेश नेताम ने, और वो भी टाई ब्रेकर की जगह जहां पर 9-7 से उन्होंने वो मुकाबला अपने नाम किया था। और दूसरे सेट में यहाँ पर 2-1 की बढ़त हासिल है अभी इस समय पार्थ पाटिल के पास, जो कि शिवाजी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहले सेट में भी पार्थ की अच्छी लीड थी, उन्होंने उस पर कैपिटलाइज नहीं करा। मैंने बहुत अच्छे प्लेयर्स देखे हैं महेश जी, जो पोटेंशियल बहुत होता है, टैलेंट बहुत होता है, बट मैच में वो कन्वर्ट नहीं करते हैं। बट धीरे धीरे करके उनका गेम जिस लेवल पे होता है फिर आ जाता है। जीतने की एक आदत लगानी चाहिए, वो आदत पड़ती जाती है। जैसे किसी भी खेल में अगर आप जीतते हो, शतक लगाते हो मैच में, क्रिकेट में, तो आपको शतक लगाने की आदत पड़ जाती है।
आप हर मैच में जाते हो तो दर्शकों को भी आपसे अपेक्षा होती है और आपको भी इस तरह से लगता है जब तक आप शतक नहीं लगाते तो मेरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई और वही प्रयत्न में आप एक बेहतर खिलाड़ी होते जाते हैं। तो ये होना चाहिए। जीत भी एक आदत होती है, लेकिन हार जाने से नाराज हो जाना, फिर आगे नहीं बढ़ना, ये मैं नहीं समझता कि कोई अच्छी बात है। लेकिन हाँ, जीतने की एक आदत होनी चाहिए। 15 लव 15 स्कोर इस समय। भाई आप देखिए सर्विस कहाँ फेंक रहे हैं, डबल फॉल्ट। फिलहाल स्थिति तो पार्थ को यहाँ सोचना पड़ेगा कि खुद की सर्व है। अभी तक कोई प्लेयर अपनी सर्व नहीं रख रहा है महेश, कोई नहीं रख रहा। और अभी तो इन्होंने डबल फॉल्ट ऐसी करी है कि कोर्ट के बेसलाइन तक सर्व करी है। लव 30 चौथा मुकाबला इस दूसरे सेट का। आप कुछ भी बोले, कुछ भी कर लें, मैं पहली सर्व तो फॉल्ट ही करूंगा। Both the players playing on the baseline, waiting each other. Love 40 और लव 40। ये महाराष्ट्र से आते हैं मेरे ख्याल से, शिवाजी यूनिवर्सिटी से पार्थ पाटिल। पूना से। अपना साथी को दे दो। तो मराठी में बोलना पड़ेगा उन्हें। उसको दे दो बॉल। कल मैं उनसे हिंदी में बात कर रहा था। तो हिंदी में बात कर रहे तो उन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया था। मुझे मराठी में उनसे बोलना पड़ेगा कि भाई तू सर्विस नीट कर, पहली सर्विस वेस्ट करो नको। वो हो बेहतर खेल, मराठी में समझा उन्होंने। क्रॉस कोर्ट खेला, हल्के से ड्रॉप और 15-40 बिल्कुल सही खेलते हुए वहाँ पर पहला अंक वहाँ पर अर्जित किया। 15-40 नीट खेल, पहली सर्विस व्यवस्थित कर, त्याच्यात फॉल्ट करू नको, ये मराठी में मैंने उनसे कह दिया और उन्होंने अंक अर्जित किया वहाँ पर। 15-40 आपकी बात उन तक पहुँच गई है। फिलहाल ये मुकाबला 15-40। देखिए आप इनके जो रैकेट का हेड है ना, फर्स्ट सर्विस, उसका एंगल भी थोड़ा सा चेक कर देखते हैं अपन। स्लो करी बॉल को थोड़ा सा। Oh, the beautiful forehand cross court by Lokesh. He generated some good acceleration. Game. And made it into a winner. Pandit. Good game. बहुत ताकतवर स्मैश उन्होंने डाउन द लाइन खेला, बिल्कुल साइड लाइन के कगार पर खेला और कोई मौका नहीं था वहाँ पर पार्थ को वापस करने का। ताकत का इस्तेमाल किया और वो ताकत और फोर्स, कंधों का इस्तेमाल टेनिस में होता ही है। और वो जब एक साथ एक सूत्रता के साथ एक माला में पिरो कर आता है तो उसका चमत्कार देखने को मिलता है और वही देखने को मिला यहाँ पर अंक के साथ। दो सेकंड सेट में अभी तक 4 गेम देखे हैं, चारों गेम्स में सर्विस ब्रेक हुई है। लोकेश की आप सेकंड सर्व देखिए, कितनी आराम से उसको स्लाइस करके अंदर ले आते हैं both the players. लव 15 लगातार चारों सर्व जो हमने देखी हैं, जिसे आपने जिक्र किया, वो ब्रेक हुई हैं और यहाँ भी वही स्थिति नजर आई पहले इस सर्व में। लव 15 स्कोर। Very good serve on the backhand by Lokesh. 15 all. 15 all. अगर फर्स्ट सर्व मैच अच्छी पड़ती है तो उससे बहुत फर्क पड़ता है गेम पे, रिदम पे। आपकी सबसे पहले तो एनर्जी आपकी संचित होती है, आपकी ताकत। फॉल्ट 15 ऑल। ओहो डबल फॉल्ट। 15-30। एक आसान सा मिस्टेक। ये खाली सर्व को प्ले में रख रहे हैं, प्ले में रखने की कोशिश में नेट पर उलझ गए।
Third all. दुष्यंत, कितना मुमकिन है कि किसी मैच के दौरान जो आप गलतियां कर रहे हैं उसे मैच के दौरान आप सुधार सकते हैं? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन भी है और इसका जो जवाब ये है कि आप जब कोई भी गेम खेलते हैं, एक लॉ ऑफ एवरेजेस बोलते हैं। आप नहीं चाहोगे कि आप कोई गलती करो, बट ये तो आप जितने प्रैक्टिस में हो, जितनी आप रिदम में हो, जितने आप अब ये देखिए, कोई जरूरत ही नहीं है बॉल बाहर मारने की। बिल्कुल बिल्कुल 40-30 स्कोर। तो मेरे ख्याल से ये निश्चित रूप से खिलाड़ी के मन मस्तिष्क पे ज़रूर होगा जब वो यहाँ से जाएगा, वापस जाएगा, घर में बैठेगा, ठंडे दिमाग से सोचेगा, अपने कोच से बात करेगा, अपने पेरेंट्स से बात करेगा, अपने दोस्तों से बात करेगा, अपने सहयोगी खिलाड़ियों से बात करेगा कि क्या गलतियाँ मुझसे हुई और उस पर चिंतन करेगा। उसके ऊपर जब प्रैक्टिस करेगा तभी वो सुधार सकता है। मैच के दौरान मैं नहीं समझ सकता, ये फॉर्मेट इतना तेज़ होता है, इतना तेज़ी के साथ आपको खेलना पड़ता है कि अगर मैं करना भी चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता, कि मेरी वो आदत पड़ गई। जैसे लॉ ऑफ एवरेजेस आपने कहा, वो मेरी आदत पड़ गई, मेरी बॉडी को वो उस तरह से प्रतिकार करने की एक ज़रूरत पड़ गई है, वो प्रतिकार करने की उसकी क्रिया ही ऐसी हो गई है, तो वो सुधारना बहुत मुश्किल हो जाता है मैच के दौरान। ड्यूस पे स्कोर और क्या बराबरी पर चलता हूँ शिवाजी यूनिवर्सिटी। The ball out of the baseline. जैसे आजकल महेश क्रिकेट में टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है कि बॉलर कहाँ बॉल कर रहा है, बैट्समैन कहाँ बॉल मार रहा है, सब while the commentary is on, we are as spectators, we are seeing everything, and those sheets can be taken out, Shivaji can University. be analyzed. But where at this level we children do not get that kind of analysis. बिल्कुल दुष्यंत, और कितना बड़ा स्टाफ होता है, कितनी बड़ी यंत्रणा साथ में होती है, कितना मैनेजमेंट साथ में होता है। जब क्रिकेट की मैच होती है तो आपके मनोवैज्ञानिक आपके साथ होता है, फिजियो आपके साथ होता है, डॉक्टर आपके साथ होते हैं, आपको किसी भी तरह से आप पीछे न रह जाए, मैनेजर आपको कोच करते रहता है, बॉलिंग कोच अलग है, आपको फील्डिंग कोच अलग है, आपको बैटिंग के लिए कोच अलग है। कितनी यंत्रणा एक टीम के साथ होती है, और फिर आपका मन मस्तिष्क शांत रहे, आप मनोबल आपका ऊंचा रहे, वो करने के लिए एक मनोवैज्ञानिक आपके साथ होता है। तो ये सारी चीज़ें आजकल खेल में आ गई हैं। हम नहीं कह सकते केवल भारत में, हर विश्व के हर कोने में आ गई हैं ये यंत्रणाएं, ये सुविधाएं, और ये अब ज़रूरत महसूस हो रही। पहले हमारे जब खिलाड़ी खेलते थे कहाँ इस तरह की सुविधाएं थी, न अच्छे कोच थे उनके साथ, न उनके साथ कोई बड़ी ऐसी यंत्रणा होती थी। खुद अपने गलतियों से खेलते थे, अपनी गलतियों से सीखते थे और उसके बाद आगे बढ़ते थे। फिलहाल इस गेम के साथ स्कोर 3-2 के साथ पार्थ पाटिल आगे चलते हुए, जबकि पहला मुकाबला वहाँ पर 7-6 से टाई ब्रेकर में 9-7 के अंकों से जीता था लुकेश नेताम ने। और देखना है कि इस गेम में क्या होता है, बताने के लिए प्लीज टेक योर मोबाइल फोन एंड go to score reading. One set, Lokesh leading by 1 set to love. Second game, Parth leading 3-2. इतना भी ये नहीं है जो मैच में फोन यूज नहीं करते। So far we have had 5 break of services in the second set. ठीक है ना? Players taking a break. What a lovely setup of the stadium. Yeah, fantastic effort by the UP government. You can see the linesmen all have hankies and caps on them. I really acknowledge the cameramen and all who was on the heat and getting this telecast to you live from Doordarshan. Said that we have Parth serving now. Love all. Nice first serve. 15 love. Parth has got his first serve after quite some time. Nice first serve. Oh, that's a very nice shot by Parth. 30 love up. 30 love. While I'm speaking to you, I've just been we have our English commentator Naveen Shourie with us. Naveen, welcome back. And we are seeing the same trend here.
3-2, Parth up, 30 love up. I see him winning this game, and we go 4-2 as the first set. Yes, Dushan, thank you. And it has been that little bit of a elongated evening, isn't it? And it's more importantly for Lukesh, his comeback script that he's etched out for himself is wonderful, even with the shortcomings of the backhands. Oh, doesn't believe the ball got on those nets on that forehand return. But 40 love now. It could have gone either way. But what did I tell you, Naveen? That what it looks so easy, I am anticipating Lukesh to make a comeback in the first set. Dushan, just because the sun is down, you want to stretch the evening as long as possible. Yeah, there he gives it away. And that is another point for Parth. Gives 4-2 in that second set as of now. And this is the first service game that has been held in this set. Otherwise, they are all getting their services broken, both the players. So set that, Parth leading 4-2 in the second set after trailing 1 set to love. And also just called, reminding us back what happened in that first set. It was game after game that was being won. It was 5-all. We thought, okay, 2 more pointers to go, but then Lukesh came back, made it 6-all. Doesn't get the elevation right on the forehand return. It could have been better on the backhand instead of going across and trying a forehand. Yeah, but he had enough time, so he just covered it and he tried to whip it on the forehand, but he hit it right at the bottom of the net. But I'm seeing Lukesh's game dropping in the last 2-3 games. Too many mistakes. I don't think he's tired. What else could be the factor? Probably lapse in concentration, because this is taking a big toll. You can go into that zone of blankness. And lob doesn't work for Parth. 15 all now. Mentally, if you're not thinking right, you can get into that blank zone in your head. That is what I'm expecting Lukesh not to be. Brilliant return. 30, 15. That's a nice forehand winner. He saw Parth moving towards the backhand. He saw the opening and that's a very nice whip on the forehand. Yeah, he's very strong on the forehand, no doubt about it. It's only those backhands that he's struggling at. Scored that winner comfortably. That was the forehand. One of the strategies the players can take is, as the game is getting longer, both the players would be getting tired. So they just need to move each other. And yes, surely I'm finding Lukesh feet. There is a problem in his footwork. I hope I'm wrong, but he's definitely draining out, what I can see. Yeah, when they're in those longer games, of course, draining each other out should be the better strategy. And that's what they did, I think, in the first set. It was 10-7-all. Then Lukesh won it 9-7. The tiebreaker got that to 7-6 under his name. Out. Forehands also being a little bit problematic for Lukesh. Yeah. He was doing just fine. It's just happening in this set now. 30, Suddenly he's 40. dropping his game. But what Parth is an expert that he also then brings his game to the other opponent's game, back to his level. He's a good television player, I think, Parth. Yeah. He knows to keep everybody on the tenterhooks. Out. That was out again from Lukesh. Parth gets it 30-all. Game. Now, and again going across on the forehand instead of trying the backhand. He's just given away a couple of points on 2 occasions. 5-2. That is the game that he was looking for. To come back into this match, he has to win this set.
And if he does not, from here it'll be a big crime, I should say, not even an error. 5-2, and Parth cannot allow Lukesh to make a comeback. He just needs one game to seal the set and stay in the match. Yes. Just imagine the situation if he had won the first set. He would have been cruising by now. But he's made life difficult for himself. Hard worker, Parth, I agree, but it should be in the right direction. 7-6 and 2-5 onto his name. Is the time where Parth has to come back. There again, these are the couple of points that I was talking about. He could have rather gone for the backhand, does not go. He tries to go across and play the forehand, but he knows why he does that, Lukesh, because he's not strong backhand. He's not having a very strong force behind that. So that's why he tries to go across, and in that effort of playing the forehand, he allows the ball to come very close to his body. He has to move even more quicker. Parth serves brilliant. That was a good serve. Yeah, he needs to get that more going. Both the players. Definitely Lukesh is tiring. Definitely. Now, if he gets that first serve percentage to about 70-75, he'd be a different player altogether. I think he's got a little bit comfort, or rather a cushion, Dushan, that he will not probably try too much, is what I feel in this game. And he will try and replenish back in the third set. That's what I'm feeling. It's already 15 love. He might not try too much. Out. There, again giving off 30 love now. 30 love. That's a good comeback by Parth now. The ball just whisking out of the baseline. Ideally good strategy is what I feel from Lukesh, because he knows Parth has ran away in this set. He's won 5 games already against 2. Kisses the net once again on that cross-court serve. So he is looking at the third set for sure, Lukesh. Lukesh may be conserving his energy for the third set. Yeah, looks like it. Looks like it. See, he's not attempting it. He is not attempting the wide ones. He just lets it go. 40 love. 40 love now. One more point for Parth to win the set and also just hang on to this match. That's a nice deep forehand. How important this break point will be now for Parth. Can he go back and rest his brains off? Can he get that 2-3 minute or even 5 minute before the third set starts? So that he has to break that point first. He does. Wonderfully well. 6-2 in the second set. And this match is going down to the third set as well. 6 games to 2. After a very, very longish, scintillating and blows per blows exchanged in the first set, it is an easy victory on the second set for Parth. Hello. Hello, Lan umpire. You know, there is this thing of changing your t-shirt between sets or something. I am a firm believer that do not change your t-shirt on the last set, because when you change your t-shirt, you actually calm down. So, you know, yesterday I saw him changing his t-shirt, and the third set he went off. Let's see, that is just my belief. Yeah, might be, because you've already warmed up nicely, and if you change, of course, your jersey, it will cool your chest down. That is where the most of the adrenaline will pump out, because of course that's where your heart is. He's not changing it. I think he's not changing it. I'll tell you what, they can't hear us on the commentary from the commentary box, but probably he's heard you psychologically. He's asking for something. He's asking for, I think, additional bit of a time. No, the chair umpire says no, carry on with it. Virendra Ravi. No change of the t-shirts. Yeah, what a match, 1 set all. And we'll
I think today it looks like Naveen will go late in the evening. But I was very happy with the first half of the day, especially the girls. Oh, they were a notch above. And we really missed out on covering the second court. I should really say that again and again. Jain University. Yes, we had a very good match. Kalinga University against Maharshi Dayanand University, where Rutuparna Acharya and Bista gave us a treat to watch with all those lovely finesse moves. But on the second court, yes, it was Jain University Bengaluru. Even they had that tie completely equalized on the singles, and they won it on the doubles. Are there any top 10 players in men's or women in this inter-varsity? Currently, Shravya is. Shravya from Jain University Bengaluru, whom we had a little bit of a chat, where she dominated 6-love, 6-1. Oh, that was awesome. She came out there even in the women's doubles, along with Pragati, another Bengaluru girl. As Parth gets that, it's love 30. Getting closer and closer of winning to that first game in the third set. Yeah, he's playing well now. He should just carry on like that. We'll give him a lot of confidence if he can pull this match through. Oh my God. That's a fault. Yeah, it is, but the first time I'm seeing that, where the first bounce is inside your court. Love 40 now. The opponent's shoulders are following. He should capitalize on that now. But said that, Lokesh has played a great game. The way he did a comeback in the first set, and he should. We'll see one of the players moving to the net. Both chipping now. Nice to see them slicing. Nice deep, and now he should move up. Oh, opportunity was there to move up. Gives away that first point away. 40-15. Yeah, nice slicing, especially on the backhands there from Parth. I was seeing these boys from Anna University. Oh, yeah. And they also seem to be awesome. Must be having 100% ranking, I presume. I have not had a chance to chat up with them yet. Wow. That's a great serve down the line by Lokesh. As I kept saying in this, while we've been talking, that a good first serve makes so much of a difference. Yeah, especially when it's an ace as well. Yeah. Pressure back now on Parth, even though it's 30-40. As we start praising Lokesh, he commits the error in the first. Nicely chopped, nicely sliced. Oh, that was so intelligently done from Lokesh. Deuce now. First game of the third set. They'll try to play a lot of drop shots because it is hot, so they don't want to move the opponent in the front. Yeah, didn't expect that part. Yeah. Did not expect that. It was a sudden move. Yeah, he could have taken that, I thought. For that, he should have just started early, maybe. Yeah. Now you see Lokesh's second serve. He just puts the ball in play. Nothing fancy, simple stuff. Yeah. Oh, again, the problem of playing close to the body. Lobs it too very high up. Gives the advantage to Parth. That's a bad miss hit by Lokesh. Good rally. We should move up now. Down. Very nice. He moved up. He gave that lob, and Lokesh responded with another lob as well. But the smash, the anxiety of just getting that point, throws away the advantage. Again, it's deuce. That was an error on the overhead.
well contested match so far. Doing good to keep the ball in play. He's gone for a backhand cross court. He's again covered his backhand. Nice on the. Oh, that's a bad drop. Oh, but he's got the point for it. Both of them are trying to move each other in the front and trying to capitalize on that. Lucky the drop stayed in the court. I was thinking it was going out. Yeah, almost on the edge of that line out there, which was just trying to put it inside. He got the placement right. He's got the advantage now, Parth. Now, can Lukesh come back with another ace? We've seen he can do that. Falls it. And then just putting it in play, as you said, putting it in legal terms. Oh, that's a nice recovery. Very nice recovery. Very nice. Both of them playing sensibly now. He should move up. Oh, that's... And he forced him to do an error. And that's a break in serve now, with Parth leading 1-0. Also, I thought, again, he was playing close to the body as well. See, watch this. Again, nice bit of a backhand. Backhand also from Lukesh, nicely done. There. Did not understand where to position his forehand on that occasion. 1-love in the third set. Nice game from Parth. He had the advantage and sealed it. Naveen, something very interesting which came up in my mind, which I thought to discuss with you. Like today, when you see a broadcast in cricket, you actually enjoy watching cricket. At the same time, you also go back with a learning outcome, because there's so much analysis done, whether it's batting, bowling, fielding, everything, there are statistics being given, everything. So that's how, everything's analyzed, how the wicket is taken. Whereas other sports, this kind of broadcasting analysis, when it starts off, this will percolate into the players and understanding and help. So do you think, how long will this kind of thing take to come in the country where, because I know that kind of money is not there in other sport, but we see a lot in cricket like that. Absolutely. I want to just add on to that point as well. Even Kabaddi. Kabaddi now has gone to minute intricate details of say the advanced failed tackles, and of course all those super raids, all those super tackles that happen, and how many do-or-die raids you've been successful, unsuccessful. So it's got to that intricate details. It's not about the money there, Dushyant, is what I feel. It's all about having a proper data guy with you, and just make him give you the right numbers. That's it. See, it's not necessarily needed to be putting it out on the graphics of on the screen where everything can be very nicely fed into. Yes, if that happens, brilliant. But at least to start off, say for example, how many backhand points has Parth lost in the first set? That's it. It's just a manual calculation. Yeah, absolutely. Yeah. Of just 10, 9 for me in my mind, at least 9. So that itself will give you a perfect analysis. We don't have to have money and technology for everything. For example, while this match is on, right now, while you are commenting, Parth is serving. He's already done 2 double faults. Correct. So correct. I just feel that after a match you get an analysis sheet and you take it, because you can't be a champion in one day. But if you analyze yourself and you have the sheets coming out and getting to you, I think it's going to help a lot. But this is a different, we'll have to reach a different level altogether. No, I mean, I'm sure it's been done by the coaches. They've been marking it down on their mark lines, as this little bit of a PA announcement disturbs Parth's serve. Yeah, now he's okay. Oh, again a double fault. Again. Yeah, there you go. Love 40. Now you see, he's done 3 double faults. I know, I've seen him play since yesterday. On one of the elements, on the psychology elements, the treatment of this boy will be done, and he'll be a much, much better player.
Absolutely. And also, the double faults when he's serving cross court. That's his first point in this game. So when he's serving cross court, and of course, as I keep saying in normal terms, that from the right side of the court, as always, that cross court serves is where he's having that problem. Even from yesterday, Dushan, you know, if you really go back, again in this game itself, there were 3 double faults. He's been doing that quite often, and now first one, again faults on that. Again faults on the first one. I think both the players are complimenting each other how to create more mistakes. But I hope he gets this point. It'll be good for his confidence. Yeah, deuce now. And he gave him 3 bonus, and he said, okay, you gave me 3 bonus, I'm going to give you 3 bonus. I'll have to go back and ask if they are good friends off the court. What a lovely setup, Naveen. Yeah, what a fantastic job the organizers have done, right from the food to taking care of all of us, and to ensure that everybody goes happy. Yeah, not easy to keep everybody happy and on the motivated lines. Yes, fabulous setup at Ekana Sports City. Advantage now with Parth. His advantage will be, I think, thrown away. Yeah, first fault. I was just expecting, I was thinking it was across the line, but even down the court, he's got that first fault. No, does not throw it away. Seals it. Wins the second game in the third set. Brilliant work from Parth. And this third set, he's playing like almost a different player, just actually taking off from where he left in the second set. Good work. As once again the forehand hopping and trying to place it away from Parth. Error from Lukesh. Not even won a game yet in the third set. He will be eyeing that for sure. But after 3 sets, if you're 3-love in a set, that becomes a big problem. And the reason why I say that is because you can't come back and win 6 games in a row. That's a problem. Even 3 or 4 games, if you lose it on the draw, that becomes a big issue. Hope Lukesh does not do it. As Dushyant has walked out for a small little break, I have Mahesh Tiwari walking into the commentary box. Welcome, Mahesh. As the first point is being scored. Right. This is 15-love. Love 15. Love 15. वहाँ पर अंक मिलता हुआ अपने सर पे अंक गंवाए हैं वहाँ पर लुकेश ने, लेकिन जिस तरह से ये संघर्ष चल रहा है, 7-6 से पहला सेट जीता वहाँ पर लुकेश ने, वापसी की, अच्छी वापसी, तगड़ी वापसी की, 6-2 से दूसरा सेट जीतकर वहाँ पर पार्थ पाटिल ने, और तीसरे सेट में स्थिति 2-0 की है और इस गेम में लव 15 और वो बढ़कर अब 15 ऑल। दोनों ही खिलाड़ी बिल्कुल संतुलित और समान टेनिस खेल रहे हैं। कड़ा संघर्ष दोनों के बीच, और मैं समझता हूं कि अभी स्थिति ऐसी आ जाएगी यहाँ पर, या आ गई है, कि दोनों खिलाड़ी थकान भी महसूस करने लगेंगे। उनके रिफ्लेक्सेस, उनके फुटवर्क थोड़े प्रभावित होते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। Nice backhand from Parth. Is playing at the baseline. Again wanting to induce that power behind the forehand. Finds the net. 15-30. Parth will be looking to seal this game. बैकहैंड का अच्छा इस्तेमाल था और उसी तरह से, उसी अंदाज में दोनों हाथों से रिटर्न करने की कोशिश की थी वहाँ पर लुकेश ने, लेकिन नेट पर गेंद और 15-30। नेट के पास मौका था वहाँ पर और वो मौके को वहाँ ताड़ा और
तेजी के साथ प्रहार किया, लेकिन बाहर की तरफ जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में नियंत्रित नहीं कर पाया अपने ड्रॉप शॉट को। देखिए किस तरह से हुआ ये। और 15-14 as well. Nice serve, and there the drop on the backhand. He's got that issue even on the returns, even on the kills, even on some slices. Backhand is having a problem. Now he does not have a problem because he had stretched Parth onto his left. Nice backhand drop, gets his point as well. बिल्कुल पास ले आए और उसके बाद जो दाहिनी क्षेत्र था वहां पर खेल कर यह अंक लिया। तो बहुत अच्छी खेल का प्रदर्शन। 30-40 स्कोर। संघर्ष बिल्कुल चरम सीमा पर इस समय। दोनों खिलाड़ी टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे हैं और बिल्कुल एक कड़ा टेनिस का मुकाबला देखने को मिल रहा है यहाँ एकाना स्पोर्ट्स ग्राउंड के टेनिस कोर्ट पर। It was Shivaji University. Serve that was needed to be scored off, but it's 3-love now. The third set for Parth. Final set. New balls, please. Lukesh, I doubt he can make some amends now. Yeah, he's trying to pump himself up. Pandit Ravi Shankar Shukla University's Lukesh Netham. He's played wonderfully well, that's for sure. He's carried on. And he's also made sure that Sandesh and Vashu Gupta stay on for the next singles. Wait on, I should say. बहुत मुश्किल हो जाता है जब आप 3-0 से पिछड़ते हो किसी मुकाबले में, उसके बाद 3-0 को पाटना, बराबरी करना, उसके बाद में 3 गेम जीतना, ये बहुत मुश्किल होता है। 6 गेम लगातार आपको जीतना पड़ता है, तो ये बहुत मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन टेनिस में होता है, होता आया है और इसके पहले भी हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल काम है। और यहाँ पर एक एडवांटेज ज़रूर है पार्थ पाटिल को, बशर्ते वो अपने खेल की ऊंचाई को इसी तरह से बनाए रखें। कई बार पार्थ अच्छा खेलते हैं, उसके बाद में अचानक डाउन हो जाते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए किस तरह से खेला था और अच्छे अंक अर्जित किए थे वहाँ पर पार्थ ने। गेट बंद कर दो, गेट बंद कर दो, बॉल बाहर चली जाएगी। It was a good beginning for him in the third set. He's won 3 games. Most importantly now for Lukesh, yeah, he's just trying to new balls in walk play around behind the baseline. He's talking to himself, saying, can I get 1 game now? Yes, it's difficult, as you said, 6 games, winning it in a row, but you'll have to see it as 1 game per time, as the first one was a fault. If you can see that as 1 game at a time, can be a little easier. Cross-court serves, again, first one was a fault. Oh, right. Why is he trying, which is completely on an awkward position. He was going towards his forehand, he was just awkwardly placed, not in the right position. बिल्कुल गलत जगह पर खेला उन्होंने। हालांकि दाहिने क्षेत्र में खेलकर अंक लिया जा सकता था, खेलने की कोशिश करनी चाहिए थी, बाहीं तरफ खेलने की कोशिश की और अंक गंवाया। 15 लॉब, लंबा लॉब और वो भी बाहर बेसलाइन के, तो लगातार अंक वहां पर गंवाए हैं। 30 लव स्कोर इस समय। A good ace there, Mahesh. I should say the first serve he does not break it too straight because he's serving down the line. Say that's a better one. But this time, cross court, first one not being a fault is good to see. Nice forehand. Brilliant from Lukesh. This is what he was trying to do from a couple of points ago. Now he gets the angle right, and as I was speaking about smothering it, there you see, that is what it is. बिल्कुल तरासा जिसे कहते हैं ना, उस तरह से तरासा, एक हल्के हाथों से, जैसे टेबल टेनिस की बात हम कर रहे थे नवीन, वही खेल देखने को मिला जैसे टेबल टेनिस में प्रैक्टिस की जाती है, खेला जाता है, वही तरह ऊपर से गेंद अपने बल्ले को ले गए, अपने रैकेट को ले गए और अंक अर्जित किया अपने लिए। 30-15, फिर भी एक बढ़त हासिल है इस समय पार्थ के पास। Nice backhand. Good slice from Lukesh. Doesn't get through. That was a very, very good slice from Lukesh. But on the return, Parth knew that he was near the nets and he was not going to come towards his right. 40-15, गलतियाँ यहाँ पर बहुत की है। जहाँ तक इस गेम का सवाल है, यहाँ पर लुकेश ने लगातार अपने आप से बात कर रहे हैं, अपने आप को हिदायत दे रहे हैं, लेकिन ये बीच मैदान में, बीच खेल में उसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा
कि आने वाले समय के साथ ही हम जान पाएंगे। फिलहाल that's it. He's got it. He's got that game. शिवाजी So easily done. 4-love. I think he's sealed the set right now, Mahesh, because the problem with Lukesh is by 4 games to love. After 4 continuous victories by Parth, I don't see him winning back. At least if he can win a couple of games, I'll give him good confidence if he is coming back for the doubles. But if not, nothing taking away from here. लॉल 4-0 की बढ़त इस समय पार्थ के पक्ष में। Unless Parth commits something crazily wrong. Blunder, crime, whatever you want to say. Oh, like this. Yeah. Like this. I was just mentioning about the crimes and the blunders. This is what it is. बात ही कर रहे थे ब्लंडर की, और ब्लंडर्स क्या होते हैं, क्या हो सकता है, वो दिखाया यहाँ पर पार्थ ने। पूरा क्षेत्र खाली था, केवल हल्के हाथों से खेलना था आपको, और आपने वो गलती तेजी के साथ खेलकर फोरहैंड का इस्तेमाल करके ताकतवर जो खेलने की कोशिश की, उसकी वजह से आपने अंक गंवाया और स्कोर 15 लव। You had to use that forehand, isn't it, on the drop? Did not use it. Goes outside the baseline. 15 all now. 15 all. लगातार एक के बाद एक कभी पॉइंट दे रहे हैं तो कभी पॉइंट वसूल कर रहे हैं वहां पर लुकेश। संघर्ष बदस्तूर जारी है। हो अच्छी सर्व, लेकिन आउट। Out. On the half volley, he's saying it was outside. He said it was outside. Lukesh. 30-15. Yeah, it's 30-15. Good that he reckoned it very nicely. 30-15. पहली सर्व तो ज्यादातर खिलाड़ियों की नेट पर ही देखी गई है इस मुकाबले में। हो अंक गवाया वहां पर। 30 ऑल होता हुआ स्कोर। 30 all. एक बढ़त लेने का जो मौका मिलता है लुकेश को, लगातार 1-2 गेम खेलने के बाद फिर से वो स्थिति बदल जाती है और स्कोर यहाँ पर 30 ऑल। I should tell you that this is a very, very good game, especially this in the third set. 4 games that's been won by Parth, and there's nothing taking away from whatever he's applied the pressure on. Again, backhand, an issue. 40 now to Parth. 30-40. Backhand has been a big, big problem for Lukesh. गेम पॉइंट पर इस समय फिर पहुंचते हुए पार्थ पाटिल। Wait please. Land umpire, what is this? Sealing that set because you don't see Lukesh coming back at love 5. Good serve. Good return. Doesn't keep it inside. Deuce. 30-40. Oh yeah, deuce. Deuce out there. Balls. Long rallies. Lobes it. He had all the time in the world. He could have Advantage. gone for that smothering shot. He plays it nicely. Why go for the forehand and just finding the net? फोरहैंड से ये अंक लेना चाह रहे थे जल्दबाजी से दाहिनी तरफ खेलकर, लेकिन वो नेट पर खेल गए और एडवांटेज की स्थिति इस समय लुकेश के पक्ष में। Nice slice. Good backhand. Lovely placement. Brilliant placement. Gets his first game in the third set. Wonderful way. But I don't see him coming back. Leads by 4 games to 1. Final set. लेकिन अगर होगा तो जैसे आपने कहा ना, ब्लंडर वाली बात होगी, मिस्टेक वाली बात होगी। लोकेश अगर हावी हो जाएंगे पार्थ पे तो ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पर वापसी ज़रूर की है और किसी भी खिलाड़ी की जो वापसी है उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए। और यहाँ पर निश्चित रूप से 4 लगातार गेम हारने के बाद 5वें गेम में वापसी की यहाँ पर लुकेश ने, और इस
सेट में 4-1 की बढ़त के साथ आगे चल रहे हैं पार्थ पाटिल। क्या होगा आगे, अपने विचारों के साथ दुष्यंत जी बताइए, क्या आप समझते हैं? महेश, वेरी इंटरेस्टिंग मैच, बट आई एम वेरी हैप्पी फॉर पार्थ that he's come back very strongly in the third set. I had commented also earlier that I find Lokesh getting a bit tired, but seeing the pattern of the game since last 2 days, nobody can say, I can't predict that Lokesh cannot make time. So it is just we'll need to see how the match progresses. But so far good performance by Parth. कड़ा संघर्ष चल रहा है, काफ़ी वक्त गुजर चुका है। मुकाबला जब शुरू हुआ तो मेरे ख्याल से 3.5-4 का वक्त था, अब लगभग 3 घंटे का 2.5 घंटे का वक्त इस मुकाबले में गुजर चुका है और तीसरा सेट जारी है, उसका ये छठा गेम चल रहा है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना लंबा खींचता हुआ मुकाबला दिख रहा है। Parth serving 4-1, love all. Love 15. Too many double faults. You just need to slow it down slightly and just keep the ball in play. बेवजह आप अंक देते हो ना, यहाँ तो सुधारना होनी ही चाहिए, क्योंकि आप बेवजह सामने वाले खिलाड़ी को आगे बढ़ने की एक प्रेरणा देते हैं आप डबल फॉल्ट के जरिए। 15 लव। जब आपने प्रेशर क्रिएट कर लिया है तो वो प्रेशर आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हो, क्यों क्रिएट कर रहे हो उसको? जरूरत ही नहीं। 15 all, now you should capitalize. 15 all. Just keep it served inside. बिल्कुल, दुष्यंत कहा जाता है ना, दुश्मनों को सर ऊपर करने का मौका नहीं देना चाहिए। अगर आप युद्ध में और खेल में जब हावी होते हैं तो वही होता है, और अगर आप उसे वापसी करने का मौका देते हैं तो फिर वो हो सकता है कि आप पे हावी हो जाए। फिलहाल इस गेम में और ये आउट। 15-30 15-30। I can see the bounce on Lokesh's leg. He can still make a comeback. जैसे मैंने पहले भी बोल रखा है कि एक जीतता है एक हारता है, तो it is better to go down fighting than to give up easily. बिल्कुल बिल्कुल, लड़कर जीतना और हारना चाहिए। ओहो, अच्छा मौका और उसे भुनाया वहाँ पर हल्के हाथों से, ड्रॉप शॉट क्रॉस कोर्ट के हिसाब से वहाँ पर चतुराई के साथ, मैं कहूँगा कि समझबूझ भी दिखाई वहाँ पर। यहाँ पर पहली बार पार्थ पाटिल ने, और जो मौका मिला था उसे पूरी तरह से कैपिटलाइज किया। 30 ऑल स्कोर। This is what I've been talking about, coming to the net, how you can take it to your advantage. And this is exactly what has been seen from here. 40-30, very important point for Parth. But Lokesh will not let it go easily. Unforced error. 30-40. Deuce. 30-40 नेट पर उलझा दिया। वहाँ पर संघर्ष करने के लिए विवश कर रहे हैं, ये बात अच्छी है लोकेश में कि छोड़ते नहीं हैं, कूट कूट कर भरा हुआ उनका संघर्ष की भावना। ओहो, आउट, फॉल्ट सर्विस। You keep trying till the last, you don't give up. You let the other person win, not by your mistakes, by his winners. Lokesh ने definitely game की speed थोड़ा lock कर रहे हैं, थोड़ा time ले रहे हैं। So that's a nice winner on the forehand by Parth. आपने नोट करा होगा कि इनकी strategy में change है। He's trying to slow down the game. बिल्कुल स्लो किया था उन्होंने ड्यूस की स्थिति। यहाँ पर पार्थ ने अच्छा स्ट्रोक लिया। फोरहैंड डबल हैंडेड शॉट उनका साइड लाइन पर अंदर। एडवांटेज टू पार्थ पाटिल। एडवांटेज 4-1 शिवाजी यूनिवर्सिटी बनाए हुए हैं इस तीसरे सेट में, और इस छठे गेम में एडवांटेज की स्थिति पे पहुंचे हैं पार्थ पाटिल। अब मैं नहीं समझता कि यहाँ पर कोई गलती करना जायज़ होगा, जहाँ तक पार्थ का सवाल है।
कुछ नहीं बोल सकते. Nice, very nice. Out. Oh, that's a beautiful winner on the forehand cross court. कभी-कभी तो Game शिवाजी यूनिवर्सिटी. बिल्कुल. शिवाजी यूनिवर्सिटी leads by 5 games to 1. खेलते रहे तो ये Final set. बहुत ऊंचे स्तर पर ले जा सकते हैं. बैकहैंड का इस्तेमाल किया, फोरहैंड का इस्तेमाल किया, आगे की तरफ पहले लाया, उसके बाद में पीछे की तरफ करते. आखिरकार इस सेट में 5 के मुकाबले केवल एक गेम दूर. क्या सर्विस ब्रेक करके उसे पूरा करेंगे? ये मैच उल्टा भी पड़ सकता है. जब तक लास्ट पॉइंट नहीं खेला जाता कुछ भी नहीं बोल सकते. ये देखिए, ये देखिए कितना ब्यूटीफुल. मैं ये तो बात आप अच्छी सर्व करिए, नेट पे अप्रोच करिए, फिर आप उसको वॉली करें. यही करेक्ट वे ऑफ प्लेइंग सिंगल्स होता है. लेकिन वो हो नहीं रहा और उसकी वजह से सर्व एंड वॉली गेम जो अपन को हमेशा सुनना पड़ता है, यही होता है. 15 लव. लुकेश नेताम, पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी. आउट बॉल $50. थर्ड लव. $30 लव. लुकेश. ओहो 40 लव. सही सर्व थी और 40 लव. क्या बेहतरीन खेल. ये अपने आप से बात करने वाली बात. इस गेम को तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये जीत जाएंगे यहाँ पर. ओह, जल्दबाजी, अंक लेने की जिज्ञासा. 40 15 पॉइंट वहाँ पर दिया. ये लगता है महेश कितना आसान. हाँ, और जो स्लो बॉल होती है, बिकॉज आपकी बॉडी का मोमेंटम फास्ट होता है. बिल्कुल. देखने वाले को लगता है कि हो क्या रहा है, बट प्रॉब्लम यही होता है कि आपका वेरी गुड सर्व उसको फॉल्ट बता दिया गया है. Attention, there is a change of court. 30. The men's doubles match between Anna University and Savitribai Phule University will 40 be लव on पे court थे, number 40 लव पे थे, तो अब 40-30 हो गए. यानी लगातार 2 अंक वहाँ पर अपने तरफ से गंवाए हैं लुकेश ने. Very well played game by Lokesh by winning this game. By winning the game, now trailing Pandit Ravi Shankar University. Third set trailing 2 games to 5. 4-0 का स्कोर था, अब 5-2 शिवाजी बनी है. यूनिवर्सिटी leads by 5 games to 2. फाइनल का सवाल है. और जब इस तरह से वापसी करते हैं तो आपका मनोबल भी बढ़ता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, और दूसरी तरफ आपका प्रतिस्पर्धी खिलाड़ी थोड़ा सा डाउन नज़र आने लगता है आपको, और उसी पर आपको कैपिटलाइज करना होता है, उसी की गलतियों पर आपको प्रहार करना होता है. जहाँ पर वो गलती कर रहा है उसी गलती को आपको पॉइंट में तब्दील करने के लिए परिवर्तित करना होता है. 7-6, 2-6, उसके बाद में 5-2 की बढ़त इस समय पार्थ पाटिल के पास 1 गेम दूर हैं. अभी भी ये मैच उनके पक्ष में आ सकता है. साथ बैठा हुआ खिलाड़ी कितना शांत बैठा है, कोई बात उनसे नहीं की, न चाह रहा है कि कोई सजेशन मैं दूं या किसी तरह की कोई हिदायत दूं. समझ रहे हैं कि आप जो खेल रहे हो बेटर खेल रहे हो, मैं आपको क्या बताऊं. ये स्थिति शायद साफ नजर आई उसके चेहरे से. एकदम सही है महेश. ये सब बच्चे एक दूसरों को इनकरेज करते हैं, समझते हैं, प्रेशर समझते हैं, पर जब तक लास्ट पॉइंट नहीं खेला जाता, जब तक कोई नहीं कह सकते मैच का क्या रिजल्ट होगा. Said that, now we have Path serving 5-2. He just needs to be composed, take it easy, breathe properly. अभी देखिए इतना हार्ड ट्राई कर रहे हैं, इतना स्ट्रेंथ लगा रहे हैं, और सीधी बॉल नेट के नीचे डाल रहे हैं. कोई फ़ायदा नहीं है उससे, खाली सर्व को अंदर डालिए अभी तो. 15 लव. 15 अभी लव. मौका है खुद की सर्व पे यहाँ पर अंक अर्जित करके, गेम जीत कर ये मुकाबला अपने नाम करने का. अच्छा
मौका है। बैक हैंड और नेट पर नीचे खेल गए। हो लगातार गलतियां, लगातार गलती करने के लिए विवश किया वहां पर। लगातार 2 सर्व में उन्होंने 2 अंक लिए, यानी 30 लव स्कोर। अब ये भी इनके एडवांटेज में जाता है। अगर 2 पॉइंट्स की लीड भी होती है गेम में, तो आपके वो आप प्रेशर क्रिएट कर सकते हो ओपोनेंट पे। 30 लव, गुड, नाइस सर्व। इतना बढ़िया पासिंग शॉट मारा लोकेश ने। 30-15, नाइस whip on the forehand. 30-15, अच्छी वापसी। देख लिया काफ़ी आगे की तरफ आ गए हैं वहाँ पर, और दाहिनी छोर पर वहाँ पर आक्रमण करके उनके बिल्कुल दाहिनी छोर से ये शॉट बहुत अच्छा था महेश जी, बट द वे ही डिस्गाइज्ड इट लोकेश वाज वेरी नाइस। ये देखना है क्रॉस कोर्ट जाएगा। ओ हो 40-15, 40-15। हेलो पॉइंट, मैच पॉइंट। कहाँ से आ रहे हैं आप? इनके अगर ये मैच जीत जाए तो इनके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा है ये। जी, मैच पॉइंट। नवीन पीछे से कह रहे हैं कि मैच पॉइंट होगा। देखना है क्या मैच पॉइंट होगा, क्योंकि काफ़ी देर से खेल चल रहा है। लगभग 2.5 घंटे का वक्त दोनों खिलाड़ी, 2.5 से 3 घंटे का वक्त दोनों खिलाड़ी बीच मैदान पे गुजार चुके हैं। 40-15, लॉब, और ये रहा गेम सेट मैच पॉइंट। शिवाजी यूनिवर्सिटी। नहीं, मैच that was a nice cross 2 court. sets to 1. Very good game. And we see 6-7, 7-6, 6-2, 6-2. 6-2. A very well contested match. Both the players put up a grand show. And we would be now also having the second singles, which would be commencing in another 10 minutes. बहुत बेहतरीन खेल ये देखने को मिला यहाँ पर लुकेश नेताम और पार्थ पाटिल के बीच में। पहला गेम वहाँ पर ये देखिए किस तरह से इस गेम शिवाजी में यूनिवर्सिटी 6-7, 6-2, आखिरी 6-2 अपने स्वर को बरकरार रखते हुए पूरी तरह से अपना दबदबा वहाँ पर बनाया पार्थ पाटिल ने। 8-6 यहाँ पर गलती हुई थी और ये बाहर की तरफ खेलते हुए 6-2 से ये तीसरा सेट अपने नाम किया वहाँ पर पार्थ पाटिल ने। तो आखिरकार जो आगे बढ़कर हारने की, अच्छा प्रदर्शन करने के बाद हारने की जो एक श्रृंखला कल देखने को मिली थी पार्थ के द्वारा, वो आज यहाँ पर भंग हुई और आज बेहतर खेल का प्रदर्शन करते हुए उन्हें मुकाबला 7-6, 2-6 और 6-2 से 2-6 और 6-2 से जीतते हुए ये मुकाबला अपने नाम किया। पार्थ विनर रहे इस मुकाबले में, लुकेश नेताम को उन्होंने परास्त किया। A very good match, Mahesh, and a great comeback from Parth, which will do a lot of good to his confidence. A boy with a lot of potential. He can do extremely well in times to come. Just needs to sort out a couple of technical issues and play to a higher level of percentage. Very shortly, we would be starting with the second match, which should be commencing in another 10 minutes. And we will bring you the live coverage of it as the match starts. कितनी देर का ब्रेक है सर? दस मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद
उषा में को मैं बता दिया